They were just one match away from getting into the grand final of IEM Katowice 2019, and every semi-finalist was dreaming about it. First up, it was ENCE Esports against Navi. The Finns had picked one of their favorite maps, Train, and was a real roller coaster with Navi's great opening on the CT side. After halftime, the CIS region favorites again took the lead, winning the pistol round and 4 out of the next 6 rounds, making it 13-9 on the scoreboard. But again, the audience in the Spodek Arena saw a twist, with ENCE winning 5 rounds in a row. The final result, 16-14 for Alexi B and his friends. Navi took revenge on Dust 2, demolishing their opponents 13-2 by halftime and taking the final result 16-3. The third and final map was Mirage, and the first half belonged to Zeus. Right side, they step back to the left, he absolutely can! Zeus! After swapping sides, Navi won the pistol round and could almost feel the smell of the grand final with a 12-6 lead. But this match had another twist, with X7 and Ariel leading their team to a 7-round win streak. At the end, it was the Finns who kept their nerves, winning the map 16-14, and their grand final dream coming true. But ENCE is going to deny the Finns, the kings of Katowice! You are shaking right there. Talk me through the emotions at this moment. Just feels amazing. I don't know what we just did, but we just beat Navi 2-1. Feels great. Second semi-final was a clash between the big favorites Astralis and MIBR. Made in Brazil picked Overpass, and it was extremely tight, with both teams taking the advantage playing on the terrace side. It was a spectacular play from both teams, with the Grand Slam winner showing it's extremely hard for any other team to win a single map against the Danes. Again, time is so low, it's looking great, they're going to stick the sides with It looked like Made in Brazil had lost their faith in beating Astralis and lost the first 5 rounds on the second map, which was Inferno. Astralis' controlling presence choked out their opponents, and Astralis played their game, which meant that they will take the win 16-7 and will face ENCE Esports in the grand final. First pages for the second, it's all down to Fur, they know where he is, he's gonna get caught! ENCE, the young roster, or Astralis, the established legend so far? I'm going ENCE all the way, baby. Easy for ENCE. I mean, Astralis, of course, favorites for this matchup. Any matchup right now in the world is going to be Astralis being the favorites, but sometimes it's not only about the brain, it's the heart. So let's go ENCE. My name is Michał Żygocki. I'm a head of production and set designer for IEM. For this stage, we have 15 tracks overall for entire show. For the 2 weeks, we have more than 30 trucks, 160 people in peak working. We have 500 lighting fixtures only for this stage, from which 300 are moving lights. We have 1,000 LED screen tiles, which is around 200 square meters. Kilometers of cabling, obviously. We have also 1 kilometer of video strips that are incorporated into the stage. On the floor, so all these gaps we see on the stage, they're gonna be filled with LED screens. We're gonna have in total 3 huge LED screens. The biggest challenge here is lack of rigging possibilities, and obviously time is a problem because we have only 5 days from the ground to the finished working product, including programming of everything for the show. We would like to have more things that can fly from the ceiling, but there's very big limitations in terms of the ceiling capacity. We are also, as a company, involved in shows such as The Voice or Dancing with the Stars, and pretty much the tools are the same. The stage itself, its design, needs, and spectators and audience have a little bit different expectations, but from the technology point of view, it's pretty much the same. I remember, I believe it was 2014, when the Virtus Pro was playing in this arena, and I brought my wife to the show, and she was even involved, like how people were reacting and how she was personally emotional with what's going on. What I think is that you really have to understand this community of people to truly understand how to also do our job, because it's really different than the concerts. If you understand it, you can think from different perspectives of the same elements that are in both worlds.
This year's stage is going to be a little bit higher. Next move is we would need to have the ceiling even higher. So it's like pretty much we are using all that we can. And of course, overall the event is growing. We have more stages. The amount of equipment and people involved on our end, it's bigger every year. When I see people enjoy, I'm happy that we did the right thing and that months of preparations were for something. The Intel Grand Slam returns for yet another season, providing a massive prize pool for teams to battle for throughout the year. To cash in the Intel Grand Slam, a team is required to amass 4 wins in the span of 10 ESL and DreamHack events, with IEM Katowice 2019 the first such event this year. So far, 3 upcoming events are confirmed to be part of Season 2 of the Intel Grand Slam: IEM Sydney, DreamHack Masters Dallas, and ESL 1 Cologne, with more tournaments awaiting announcement. However, the $1 million prize for taking home 4 titles in the span of 10 tournaments isn't the only prize available. The new season is bringing back the Giant Killer bonus, a $100,000 prize that's awarded to a team who manages to stop their opponent from picking up their 4th Intel Grand Slam win. Talk about incentives. Will Astralis be able to pick up their 2nd Intel Grand Slam title, or will a new team emerge as victors here in Season 2? In any case, the Grand Slam is sure to bring more drama and excitement in 2019. Astralis, I wouldn't know what to do, and this is someone that has anti-stratted a lot of teams in You're my the career. expert. Yeah, I've looked at a lot of demos, and when you watch Astralis, they don't really have tendencies. They're very reactive, and it seems like they've gone over every single reaction possible, and they always make the right call in every situation. It's very difficult to find a hard counter to any of their setups. And that's just the way it is with Astralis, right? They're so good at reacting. They're so good at changing up the play. It feels like their playbook is deeper than anyone else. And the only thing you can get going for you when you're playing against Astralis is try to think one step ahead, right? Try to expect that expected reaction coming out from Astralis. And already, you know, by saying that, you're already a step behind. So what do you do when you're playing against Astralis? Well, you have to play the absolute best Counter-Strike that you can. Otherwise, there's no chance you win. I mean, a perfect example of that is you look at the MIBR series. MIBR played them on Overpass, right? That was a map MIBR should have won. Astralis hit the B bomb site something like 12 rounds in a row. Like, you knew it was coming. There's no way MIBR expected them to hit the B bomb site 12 rounds in a row because it's Astralis. They have such a deep playbook, but they might just do something like that. And you just sit there going, there's no way they're coming again, now, right? Like, I can rotate this time. They get in your head, and you need to get this in your head, because Zonic sat down with Frankie just a moment ago. Zonic, how is the mood in the Astralis camp? We are really happy. Being here in the final, even though that we won the last major, we are really satisfied making it so far in the tournament. There's been a lot of great teams here, so we are just really happy, but also looking forward for the match. And are you surprised that it's going to be ENCE you'll be facing? They are playing really good, but of course, have you asked me before the tournament, I wouldn't have said ENCE, but they have proven themselves, and they definitely deserve to be here. So what are the strengths that you've been studying in the side? Well, we've been looking at the veto. It's been kind of difficult for us to figure it out because both teams don't like to play cash. I think that they're not going to veto it because of them being the underdog, so they're probably going to put the pressure on us, but we, as always, come prepared. And how do you think the guys are going to fare on that stage? Because in some ways, the pressure is more on Astralis today. Yeah, but I think that I think being at the spot where we are right now and the way that we've been playing for the last year or so, I think that we're always under pressure, so my boys are used to it, and yeah, we just want to get going. And it's going to be an absolute fight. I can't wait to see it, Zonic. Let's head back to the desk. Wow. So we just learned something quite juicy, that it's just been acknowledged. Yeah. We talked about it. We theory crafted it. Back at the hotel lobby, I've seen the Twitter sphere alight with speculation about the veto, and do bite your tongues, because that is coming up. We have the pre-match, Sean. Okay. Can you just gobble that up? Okay. Swallow it, keep it for a minute.
We can't talk about the vetoes yet because that is a conversation that is very crucial to, it could be, you know, champion defining, and we haven't got time for that right now, because instead I want to quickly remind everyone about the enhanced viewing experience. That's right, if you want to watch this grand final with a little extra spice, you can do so. It's nice and easy to do. Just add _premium to the top URL bar, and it's just an interactive way for you to get more stats and other information. You can bring up the scoreboard at any time if you want to keep track of just how much fragging damage your favorite player is doing, and alongside that, different mini-maps and more. And I've got an extra information here that I haven't seen before. Active once the match is live, and the first 15 rounds are free. There you go. That sounds like fun, yeah. So you can go ahead and check it out. Just add _premium, and it will, of course, get live once the match is live. Now, these guys are chomping at the bit to start breaking it down and analyzing and expecting how the maps and the game is going to be playing out. And we will do all of that when we return from our break. The grand final gets ever closer. Do stay with us. Tell your friends it's about to go down. Don't touch me. Probably you got some modern stuff, like I don't know. Can I start? Okay, let's see what is in the box. I'm a Barbie girl. That's it? You want more? No, it's okay. Oh, that's the big thing. I feel like I should know this one. It's kind of like this, right? This is like a joystick. I don't know what this is. What is this? Yeah, I know what it is, but I cannot explain you guys what it is. Oh, it's just like a joystick thing. Okay, this is obviously some type of controller. I don't think it's an Atari controller, but that would be my guess. Like a game controller, like you drive like car or something? Some type of controller for sure. I don't know. I'm just gonna guess joystick because I don't know what it is. Okay, joystick. It's a joystick. Let's go. Oh, I think I know exactly what it is straight away. Что это? Wait. This is like a Game Boy? Ah, it's a Game Boy. Oh my god. A Game Boy? A Game Boy Color or what is it called? Is this a Game Boy? Oh, it's Tetris. No? I'm an old guy. Like Game Boy or something? I'm pretty sure I know. Pretty sure it's a Game Boy. Can it be Game Boy? It's a... I know it. You know? You should do it now too. Is this some kind of controller? Oh, this one's easy. Describe it. It's a Game Boy. I didn't play any of this stuff when I was a kid. Really? I used to love Game Boy when I was a kid, dude. Game Boy. Yeah, Game Boy. Easy. I played too much on this when I was a kid. It's Tetris. It's some kind of Tetris, like a Game Boy. It's a Game Boy. It's a Game Boy. Yeah, it actually is a Game Boy. I was getting suspended from school, like they had to take it away. Come on, I was born in this generation. Thank you. Oh! Disket. Okay, I know what it is. Should I tell it now? It's like a disk which you put in to the computer. Oh. I don't know the name, I think. Like, I know what to do with it. Is there any advice? Clues? Yeah, this is the old disk. I don't know, the Swedish word is diskette. Is this like a floppy disk? I get it? Oh, sweet. Yeah, like an old... old school. What do you call it? I don't know. You put it in old computers, isn't it? There's some kind of a disk. Oh, disk? Yeah. I remember this. I'm too old, man. I'm too old. Yeah, a disk. What is it called, like? This graphing. Easy. You say. You had a game on it or files, whatever. I think like one of these was like 1 megabyte or something. Like. Yeah, it was before the CDs. Yeah, we had the small discs. What are they called? I think it's a floppy disk. Damn, dude. Diskette, yeah, diskette. Yeah, diskette in Danish. I play games with diskette.
Oh, okay, I know it. Yeah, it's a disc. Oh, it's a diskette or how it's called. Is it a thief? It's only one. What the perfect size. Yes, give me the touch the nipple. The nipple. It's like a teeth. So I can hear it? Yeah, thank you. I'll take it. Ah, yeah! Yeah! It's something you want to give to a gamer. It's a plastic ball kit. The first time I touch, I know it. My name is We have such a good mentality, like through the tournament, even like the first week, second week, the whole tournament. The mentality we had, we cannot do anything, okay, let's try to just grind and stuff like that. Yeah, it's been two different experiences because today we had the crowd with us a little bit and we didn't have that against NIP, so that was quite nice. Nobody expected ENCE to be in the final. They are really unpredictable, so we definitely have to go home and study them a lot. When I'm watching all the other opponents, Astralis is probably the only one I'm seeing such a good quality games that it's very hard to interrupt their game. Really impressed with their composure as well. They've been playing like with ice on their veins. They've played some close matches and actually do comebacks against Liquid, comebacks against Na'Vi. So yeah, they definitely have everything they need to be a top team. We don't feel the pressure that we're losing something. We just play round by round and keep doing our stuff and enjoying the game. And that's actually something I don't see other teams having fun so much.
the Danish people in the arena, of course, and the Polish people, they always bring like a really sick energy. So yeah, I'm just excited to play against ENCE, and I have a little like gut feeling they're gonna cheer for ENCE because they're the underdog and everybody loves like a Cinderella story. It's gonna be a huge task for us, but we have to believe in ourselves. We believe that we have a chance here in the major to the final, and we also have the chance to take the final. So let's go all the way. Twister the coach saying we have a chance, let's go all the way, and the fans seem to agree. ENCE jerseys sold out in Katowice, every seat taken, and the last few premium and visitors are on their way to their seats as well. A packed crowd for what could be a fantastic grand final, and of course I'm prefacing it with could be because I truly do not know which ENCE and which Astralis are about to be walking onto that stage. I mean, if we look at the last 2 weeks, I know it's going to be a good grand final. I mean, literally a month ago, ENCE was the 14th ranked team in the world, and you would have asked me coming into this match against Astralis then, I said, oh my God, we're going to be out of here in, you know, probably record time today. But honestly, they stand a great chance. The way they've been approaching the vetoes is very smart, and the way they approach even the maps they don't play is super intelligent. They have very strong defaults. I think one of the biggest strengths for ENCE is the foundation that they've built up as a team, right? It's a team that's been together now for a year, I believe, if not even more. They started at Cologne doing a great result. They came into Star Ladder where they won a tournament for the first time, moved on to DreamHack Winter, I believe, where they also got another title under the belt. So they sort of moved up in the rankings, now finding themselves at the big stage at a major, having built a great and solid foundation. I think that's why it's so tough to beat these guys, because they have so much like know-how of how to play together, how to play from behind, and all that kind of stuff that is built into this strong foundation. Do you think there's something to be said as well for the fact that they started as a 5, you know, February of 2018, and stuck with that 5? I mean, like this kind of not forcing a roster change when a result doesn't go your way. Do you think that's an ingredient? It's definitely an ingredient in this whole thing, because you watch them and their communication and the way they move around the map and play off each other is so strong. I mean, it's like a homegrown project that Natu has created, and he's put so much work into. Ironically, actually, I'm not sure if anyone mentioned it, he was a player on Astralis in like 2005. Well, that is, oh, that's beautiful. Nice. the creator, founder, and essentially father of ENCE. Yeah. To play for Astralis before Astralis was Astralis. Yes. There you go. World, huh? Yeah, that makes sense, right, Jacob? And on the other side of things, we've said their name an awful lot, but Astralis are going to be stepping into this one. I actually want to move to the vetoes, because this is going to be interesting. You already were biting your tongue before, Sean, and now I'll let that word gobbledygook slip. Yeah, what's so interesting about this veto is both the teams banned Cash, which is the same thing that happened when ENCE played Na'Vi, and they had it in them to float that Cash ban against Na'Vi and made Na'Vi ban it. I think they're going to do the same thing today against Astralis. It's on Donic made it seem like they're going to want to play Cash. They're prepared for it. But no, they actually... So they did it. Astralis actually bans Cash. Now this is where ENCE actually has quite a few options. They could pick Train, Overpass, or Mirage, and I think they would stand a very good chance at beating Astralis on any of those maps. Yeah, I definitely agree. I like the fact that they're coming into this one and willing to float Cash, right? They know they're the underdog. They know they have to take a risk in this video in order to make sure that they get an edge. And they are picking Train, which is a map that they have looked very strong on. That said, though, we've seen Astralis played once in the tournament and they 16-0 Cloud9. Yeah, but that isn't much. As in, of course, 16-0 is incredible. But we haven't seen too much from Astralis' Train. We haven't got a real litmus test for just how hot they are. No, we haven't. And if you were to ask me who has a better Train, Na'Vi or Astralis, I would say Na'Vi 100 times out of 100, especially simple going off and getting both pistols. Oh, okay, so they were given the choice, Dust 2, which we have seen some interesting ENCE games, actually some of the less successful games on Dust 2, and they were given the choice and chose to take it to Overpass as a third map. Dude, if I had to choose a second, like a map after Inferno that should be like a major third map, I think Overpass would be up there. I think it's a very great map for ENCE as well. I think they're super happy with how this veto went down. They were able to float cast, they were able to pressure Astralis into allowing them to play Overpass as a potential third. ENCE have, as we say it sometimes, they won the veto game. They definitely won this veto game. You are going into a major final as an underdog with your permaban gone and Astralis' unbeaten 28-0 nuke out of the picture before you've even started picking. That's a dream. And probably the worst map for ENCE in this major run is Dust 2. And that's not even played. Wow. Okay, we'll continue, but of course another fresh face that we need to introduce you to is Chad Sponge Birchall. He's over at his favorite machine. He's going to be breaking things down.
All right, it's only fitting that we have Train here. This is the map where it all started for ENCE on the run. They were down 7-0, and this is where they were able to bring the comeback against Big. I want to focus on one of the strategies they ran, and what I really want you guys to notice is these two smokes. These are constantly used throughout on the T side from ENCE, and it's their map choice. They're going to have to make these work. This is the round where they threw the opening smokes, they drew the attention, and they've actually gone back towards inside, which you can see right here for a dry hit. They have multiple variations with these smokes being used for them to allow him to hit bomb sites. Let's just take a look at another one. This was round 10 against Na'Vi. It was an eco round where they just upgraded some pistols and some armor, and they've gone fast onto the yard. Once again, these smokes are going to be used. This is just obscuring the vision, and it's very important for these smokes, you know, and for Astralis to be able to stop these kind of attacks, Alex. So this is one that they need to shut down if they want to stop ENCE today. I mean, yeah, these incredible rounds, every single individual from ENCE has had their moments, and Sergey definitely, Alexi B, X7, I think the list continues. Alu definitely has had his rounds, and I'm forgetting one. Who did I not list? How dare I? I'm not. It's not ringing a bell. But they found themselves down in some serious holes throughout this event, and they always have managed to come back. Chad showed this one right here where they were down 7-2 against Na'Vi. They were down 0-7 against Big. They were down 15-7, I believe, or 15-8 against Liquid. Guys, I mean, they have so many comebacks. You see? Oh my god. Apparently 2,500 people voted in this poll. The memes have gone too far now. Yeah. Is it just dank social media memes? I think we're going to have to assume. Or salty people that don't want anyone to get diamonds. Yeah, that's probably a conversation in itself. But okay, so there's definitely, the fans have fallen for ENCE. They're under their spell. And I mean, you can understand why. They're a crowd favorite. You go out there in the crowd, I promise you, this crowd is majority ENCE right now. So they definitely have the crowd working for them. And in past majors that I've attended, that's a big factor. I think the Cloud9 major, the fans really motivated them to get that. I definitely think so too, and that's just another thing Astralis have to overcome, right? They're trying to rewrite history. They're trying to be the second team in history, winning back-to-back majors. Only Fnatic have done that so far. This is the best team to ever exist in Counter-Strike, and they're getting all the obstacles thrown ahead of them. The crowd is not with them. The fans are not with them. Partly we're not with them. We want to see Astralis lose at some point. We want to see them be human at some point. But in the end, right, Astralis have just been the best team for such a long period, and it's just impressive to see them keep winning and winning and winning. Well, we'll find out if ENCE can put up a fight because, gentlemen, don't panic, but I think it might be time. It is grand finals time. The IEM Katowice CSGO Major Championship is about to reach its crescendo. We'll head over to the stage to get this party started. It's going to be tough, it's going to be a long road, but this is what we love, and this is the reason why we do it. It's to play in those stadiums and these arenas. It's going to be a great moment in my life, like an achievement of mine, because we are trying to get our family members to see what it's like to play on the big stage.
certainly is. The first kill, though, goes the way of Flamey. Flamey's got another. Nubox is preoccupied. If he wraps in, they're both gone for Nemo, and they're going to push it all together. Bombs TP's got a swing. They know that. Flamey, he gets an ace. Welcome to Spottic, everybody. Angles, and it's down to Twist again. They know exactly where he is. He's gonna land there and shot. 32 kills to his name's gonna add another one, and here's the crossfire. 20 seconds left, and Ali chipped in for a third and a fourth. ENCE have done it. They pulled off the upset. Go for the doors and the window. Taco waits below it though. Taco waits below it and he holds! He's playing this one so slowly. Feasibly stop this from getting done. Oh, he's picked up two. Looking for a third. Lanson. I've had so many different emotions in that arena. I've played so many big games in there. I've been so disappointed so many times in there, but I always have so good memories of it. The symbol will be nailed down to 35 HP. He gets a double kill. He has the audacity to stick around. And Alu's the anchor, and he certainly will hold fast now as he gets yet more. He arrives just in the nick of time. Sometimes you lose and sometimes you win, but you want to prove that you can keep staying on the top and play good CS even though everyone is aiming to take you down. And first time on the major, we have nothing to lose here. We just have to show what we're capable of. You miss family, you miss your friends, and therefore I also put so much emotions into it. This is everything for me. This is my life. This is what we live for, because what I love to do on a Sunday is put my pants on, get hyped, and watch computer games. But this isn't just any computer game. This is Counter-Strike, the best esports on the planet, and this, the Intel Extreme Masters 2009 in the next few hours. And the two teams that are battling it out, my word, do we have a storyline for you. On one side, arguably the best CS team ever to play this game in Astralis. And the Astralis fans, they are looking to do back-to-back majors. They've achieved a lot. They've never done that. On the other hand, you have the Cinderella story from the closed qualifiers to right now, not just the biggest stage they've ever played on this year, but ever. And that is ENCE. And the ENCE fans, it's about the trophy, it's about being called champions, it's about bragging rights between Denmark and Finland. So baby, let's get it on! Please welcome to the stage the first team, and that is Astralis! They have won everything recently, but you look into their eyes, you know that they want this as well.
And if you check the form books, the betting, you would know they are massive favourites. But that's what's been against the next team all the way through this tournament. They are underdogs, but they are here to win. Please welcome to the stage. It's ENCE! Easy for ENCE, 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 put it upperbelt, put it upperbelt. Miner Spaceri haastaa legendaarisi. Nyt isos liigas niinku Roosberg. Suomalais rättii maailmanluokan kaliberis. 2 lasi maito ja 1 lasi piimää. Ei se kylpää ja ei se siittää. Okay, here we go. We have got a grand final and a packed out Spodek so full. They are sitting behind the stage and watching it on screens back there. Respect to the lurkers. 1 million people at home watching. Let's get a grand final on. Who's winning this? Is it Astralis? Is it ENCE? One more time. Is it Astralis? Is it ENCE? It's time for a grand final. Let's get it on! Yes, the concept, modern video games, competition, and yet this is one of the most ancient of all pursuits, to be the best. Humans have been trying to do it in every facet of life for as long as we have breathed air, and now we stand here in the Spodek, 10,000 in the stands. Million is the number being thrown around just yesterday in the semis, and now a major final which could perhaps deserve even more. The players now on your screens determine exactly how good this final will be, both Astralis and ENCE. Guys, there's a bit of a contrast here. We've got all ENCE in their seats already here in the warm-up, and Astralis, they're having their convo. They are preparing, right? They're making sure that everyone on the team knows exactly what to do when they're going up against ENCE. I promise you, Sonic has been staying up all night making sure that they know every single little detail about what ENCE can throw at them, and that's exactly what he's telling them right now, to be ready for those and those small tendencies that they can throw at them. Astralis is probably not only the best team to play the game, but also the best team at preparing for their opponents. Without a doubt, Astralis is the best team to ever play, and they will cement that if they win today. But you cannot change an entire game plan within 24 hours for 3 maps, right? They didn't know if ENCE was going to pick Train, Mirage, or Overpass. Right. Surely Zonic put in some work for each map, but they can't drastically change their setups in such a short amount of time. Our second map's Inferno. Of course, we'll talk about it when we get there, but they're on a pretty undefeated streak on that too. I think 14. But so is ENCE when it comes to Train. ENCE have played Train 10 times this year and won all 10 times. They're unbeatable, basically, on Train so far. So Astralis would have to be the first team in 2019 to beat ENCE on Train if they want to go at least secure a 3 map at this major. Wow, okay, so we've got undefeated records clashing on a grand final stage. I don't think you could ask for much more. Let's not forget Alexi B, 21 years of age, and yesterday saying we're going to break their record. That takes a whole lot of something. I mean, he could even be talking about the fact that they haven't even dropped a map in 2 straight major playoffs. Yeah. 10-0 in the last 2 majors when it comes to the playoffs. That's an incredible feat. I don't know how that's even possible. I mean, you're playing your opponent's best map pick 5 times, and you win every single time. You just impervious to Counter-Strike. You just can't fall. You can't drop a map. We have seen them bleed once at this major, and that was on Mirage. No Mirage to be seen there. No, and Astralis is by no means unbeatable. They just seem to be unbeatable, right? We've seen Renegades beat them. We've seen teams test them to the wire. MIBR did it yesterday. NIP did it in the quarterfinal. Of course, you can beat Astralis if you're playing your best brand of Counter-Strike, but that's what is required from ENCE. They have to play the absolute best Counter-Strike that they have ever done if they want to stand a chance to beat Astralis in this final. The craziest thing is the map that they dropped, they had a 12-3 lead on. It's not like, you know, they were down the entire map, went to overtime. Same thing in the last major. They were actually down 13-2. They managed to bring it to overtime. When these guys lose, it's still a close game. When they are down, they are by far from out. ENCE are the same, though. Yes. You could say exactly the same, copy and paste that statement for both of the teams on this grand final stage. They've been down to huge deficits, and they have overcome them. Both teams have done this on multiple occasions, and Astralis versus ENCE is about to go down. Guys, you feeling it? You starting to get the Counter-Strike tingles? You ready?
I was ready ever since yesterday. That Na'Vi ENCE game, that was really getting me fired up, and I think today could be just as good. Yeah, I'm so ready. OJ had the hairs on the back of my neck standing up. I'm so ready to see if ENCE can pull up the greatest upset in history. Yeah, we've seen esports come close to Cinderella stories. We've seen impossible runs from all across the different stratosphere of games. We've seen TI champions from open qualifiers and ENCE. Now in the Counter-Strike world, look to challenge the Goliath. It's Astralis taking on ENCE. Their first major Astralis looking to win them back-to-back. This is the juxtaposition. This is Astralis versus ENCE, and it is map 1. Henry, Sado, I know you're going to bring the noise. और स्वागत है सबका यहाँ पे IEM Katowice के फाइनल्स में, जो कि Astralis versus ENCE, अंडरडॉग वर्सेस द चैंपियंस। पहला मैप है ट्रेन, सेकंड मैप है इन्फर्नो एंड थर्ड मैप ओवरपास। और 2 मैप्स में बहुत अच्छा खेलती है यहाँ पे ENCE। देखने वाला होगा पहले पिस्टल राउंड में कैसे खेलते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है सारे ही दर्शकों का यहाँ पर। ENCE वर्सेस एस्ट्रालिस। यहाँ एस्ट्रालिस चाहेगी कि बैक टू बैक मेजर्स जीते और ENCE चाहेगी बहुत बड़ा अपसेट करने की कोशिश। इसी बीच राउंड शुरू हो चुका है। पहले राउंड में 2 फ्रैग्स यहाँ पर ENCE को ऑलरेडी मिल चुके हैं और 1 फ्रैग, 2 फ्रैग और एक और फ्रैग यहाँ पर X7 को, और चीजें मुश्किल होते जा रही हैं। डुपरी को 1 फ्रैग जरूर मिलेगा। उन्होंने X7 को मारा और Xipix की पोजीशन अब रिवील हो चुकी है। उन्होंने एक शॉट लिया है कनेक्टर से। तो क्या कहते हैं अंकित, क्या होगा इसका नतीजा? कौन सी टीम जीतेगी आज? ये 3 जितने Astralis के फेवरेट्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीतेगा पता नहीं, लेकिन ऐसा बहुत टक्कर का मैच करने वाली है। ऐसा एडी चोटी का जोर जिसको बोलते हैं। P4 चालू, इस राउंड किट जरूर थी ग्लेव के पास, लेकिन उस साइड पर ड्रॉप्ड है। लेकिन यहाँ पर अब सेव करने की कोशिश, आर्मर लूज नहीं करना चाहते थे, थोड़ी डैमेज करने में डुपरी यहाँ पर हताश होते हुए सेव करने में कामयाब हुए। लास्ट प्लेयर सीटी के यहाँ पे जिपनिंग कामयाब जरूर हो गए, और अच्छी बात ये भी उनके लिए कि अगर नेक्स्ट राउंड पे आर्मर सेव कर सकते हैं तो थर्ड राउंड एक उनका और अच्छा बाय हो सकता है। मे बी ऑफ भी आ सकती है उनके पास, डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर चाहिए कि नहीं। बिल्कुल, अगर जीतने की बात की जाए तो यहाँ दिल कहता है कि ENCE जीते, पर दिमाग बोलता है एस्ट्रालिस। दिमाग बोलता है शायद एस्ट्रालिस जीत जाएगी। बहुत ही कश्मोकश में पहले राउंड आपने देखा तो यहाँ पे 2 स्मोक बाय करे थे। C4 ने स्मोक किया, पीछे बैक टेन स्मोक करके सीधे शेडो में घुस गए थे। और सबसे बड़ी गलत बात है पे यार बोल सकते हैं एस्ट्रालिस की, स्मोक के आगे खेल रहे थे। ये काफी डेंजरस पोजीशन होती है अगेंस्ट ग्लॉक, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप फ्रंट डिफेंस में रहे। बिल्कुल, अगर आप क्लोज रेंज में आते हैं तो ग्लॉक से हारना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। पहला राउंड यहाँ हो चुका है ENCE के खाते में, 1 राउंड ऑलरेडी बढ़त, और शुरुआत से ही प्रेशर यहाँ डालना चाहेगी ENCE एस्ट्रालिस के ऊपर, क्योंकि अगर मौका मिला एस्ट्रालिस को तो आप जानते हैं वो रुकने वाली ट्रेन है। यहाँ पे बाय नहीं किया एस्ट्रालिस, उनको पता है इनके बाद थर्ड राउंड बाय होगा। यहाँ पे आलू के पास खाली मैक्टर में से स्काउट करने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा नेड, वहाँ पे मैच इसको काफी लो किया। आलू ने थोड़ा डैमेज जरूर लिया है वहाँ पर, लेकिन जल्दी, और ये एकदम क्लीन राउंड हो सकता था, लेकिन Xipix किसी भी चेरल को मारा उन्होंने। अकेले बचे हैं और ये एक और राउंड आलू ने सफाया किया। और वो मैक्टर लेके सीधे आगे चले गए थे। जब वो तो एली तक पूरा चले गए थे, उनकी टीम ने उनको बिल्कुल उस टाइम तक हेल्प नहीं किया था, पूरा स्काउट कर रहे थे। उनको 2 किल मिल गए, इसके बाद ही पीछे से उनको फॉलो किया कि अगर कोई स्टैक ना हो ये साइड पे, अगर होता तो बी जाते हो, नहीं होता तो ऑब्वियसली आपको ये साइड मिल ही रही है। और यहाँ पर एस्ट्रालिस ने काफी अच्छे से रीड किया है ENCE को। जरूर इनके अभी प्रीवियस मैचेस भी ट्रेन में जरूर देखा होगा उन्होंने। और मेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे हेडर में काफी फोकस किया एक्सेप्ट ग्लेव, क्योंकि उनको पता है ये सामने मैक 10 अभी भी हैं, अभी भी एक मैक 10 है। और एक गले ले, और अच्छा नेड, सीधे 100 का डैमेज। ड्यूपरी अच्छा किल भी। C4 ड्रॉप हो चुका है। राउंड में अभी भी 1 मिनट 35 सेकंड के लगभग टाइम बाकी है। एक और फ्रैग मिलता है यहाँ पे, और ये राउंड थोड़ा बहुत पास करना खेलना चाहते थे। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे एस्ट्रालिस इतने अग्रेसिव खेलेंगे, काफी अग्रेसिव, ऊपर से वो नेट सामने पूरा ब्लॉक करते हुए, और जब नेट ने ब्लॉक किया उसी टाइम ड्यूपरी ने बाहर निकल के एसएल से 2 पिक्स ले लिए। डबल एसएल खेल रहे थे। एलेक्सी भी अकेले जिंदा, सेव करने में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं? उनकी पोजीशन थोड़ी सी ऑफ एंगल जरूर है। 1 फ्रैग मिलेगा, लेकिन अगर डबल पीक उनके ऊपर होता है तो बहुत मुश्किल होगा।
उनको बचना। मैजिस ने ये पोजीशन क्लियर तो कर रखी है, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं एलएक्सीबी को स्पॉट किया उन्होंने और अब इनके ऊपर रश हो सकता है। 56 सेकंड ऑन द बोर्ड और ये क्लच करना तो बहुत ही मुश्किल है। क्या एलएक्सीबी क्लच को जाएंगे या अभी भी सेव करने की ही सोचेंगे? सेव करने के मूड में ही दिख रहे हैं। मेन फोकस शायद उनका अगर एक आधा एक गन और ड्रॉप करने का, रिवाइव यहाँ पे फोर्स करने का, क्योंकि जितना रिवाइव फोर्स करेंगे उतना ही इकोनॉमी वीक होती जाएगी एस्ट्रालिस की। एस्ट्रालिस को ये बात ध्यान में रखनी है। किल आना है लेकिन यहाँ पे एक आधा फ्रैग और नहीं जाना है। सुन लिया है शायद यहाँ पर, और ये स्मोक के थ्रू ही डिवाइस ने खत्म किया। गन सेव नहीं कर पाए और एक राउंड एस्ट्रालिस यहाँ जीते हुए 1-1 का स्कोर, 2-1 का स्कोर, माफ कीजिएगा। पेंस के पास लास्ट राउंड जी हाँ पैसा है, बाय जरूर करेंगे। 2 यहाँ पे एसएमजी आएंगे जिसकी बात कर रहा है डबल एसएल। मोलोटोव जरूर आया था लेकिन मोलोटोव काफी पीछे गिरा, जिसमें सिर्फ मेरे ख्याल से मैचेस जल रहे थे। आपकी जगह ग्लेव थे, खाली ग्लेव जल रहे थे। डुप्री बहुत ही अच्छे 2 फ्रैग्स वहां पर अर्ली प्रेशर में ही, एकदम शुरुआती प्रेशर में डाल दिया वहां पर एंस को। फिर से साउंड बाय जरूर किया है। फास्ट यहाँ पे पुश, जो पिस्टल में ट्राई किया था मैच, सेम स्टैट है, कुछ भी अलग नहीं है। और ये यहाँ काफी सारे शॉट्स मिस करते हुए, ये एक्सपेक्टेड नहीं था सर्गी से और इस चीज का भरपाई करनी पड़ी, खामियाजा भुगतना पड़ा। और बिल्कुल सेम किया था पिस्टल राउंड, 2 स्मोक वहां पे बिल्कुल, लेकिन इस बार एस्ट्रालिस स्मोक के पीछे खेल रहे थे। और मेरे ख्याल से वहां पे अगर एक मैक-10 की जगह एक AK होती ज्यादा अच्छा फायदा होता, क्योंकि वो काफी शॉट मिस किए उन्होंने मैक-10 से। ये देखिए, ये अगर 2 फ्रैग उनको मिल सकते थे मैट, अगर एक AK होती तो। लेकिन यहाँ पर एंस अपना ही बनाया हुआ खाना खुद टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। जिस तरीके से ऑग से बर्बाद की जा रही है इनके राउंड्स। डिवाइस बहुत अच्छा शॉट वहां पे सर्गी को उन्होंने डाउन किया, तुरंत फॉल बैक करते हुए, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि अलू काफी अग्रेसिव उन पे पुश करने की कोशिश, लेकिन पोजीशन छोड़ चुके हैं डिवाइस और अब अच्छी पोजीशन लेने जा रहे हैं। एक फ्रैग और मिल सकता है, डिवाइस का कोलैप्स वहां पे। 4 फ्रैग्स डिवाइस के, शुरुआती प्रेशर। एक फ्रैग डुप्री लेते हुए C4 प्लांट जितना चाहते थे हंस, एक आधा प्लांट अगर C4 कोई बी साइड के पीछे से खेल रहा होगा, शुरू में डिवाइस खेल जरूर रहे थे पीछे से, तभी डुप्री ने खुद को आगे ले आए। ठीक है, फ्लैट हेडशॉट भी। तो जाते हुए यहाँ पे छठे राउंड में, 6th राउंड में फिर से बाय है, लूजिंग राउंड बोनस, और एक राउंड पिछले राउंड इको भी किया था यहाँ पर एंस ने। उसने थोड़ा यहाँ पे अप्रोच चेंज किया है, जैसे हर राउंड ए पे हमेशा उनका एक आधा स्मोक आगे एग्रेसिव है, लैडर रूम के अंदर का मॉली कर रहे थे, तो पूरा ही अप्रोच चेंज किया है। एली पे 2 लोग, 1 मिड पे और 2। अभी जिस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन है, जो पोजीशंस पे खेल रही हैं एस्ट्रालिस की टीम, अगर देखेंगे तो 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं एसएल, एक प्लेयर खेल रहा है इनसाइड और 2 ऑलमोस्ट आईवी के पास हैं, आईवी और सीटी। यहाँ पर बी रश हो जाता है तो बहुत डिफिकल्ट होगा काउंटर करना। ऐसे सिचुएशंस में सिर्फ डिवाइस अकेले हैं शायद, बी पर नहीं, ज़िपिक्स हैं अकेले। भी रिटेक खेल रहे हैं वो काफी पीछे से, सिर्फ उनका काम है स्पॉट करना और मोस्टली एक आधा ग्रेनेड फेंक के प्लांट रोक सकते हैं या थोड़ा डिले कर सकते हैं तो वो करना। और एंस का डिफॉल्ट है 2 आईवी, 1 मिड और 2 तल के ऊपर। ओके ये कोशिश एलेक्सी भी की अच्छी, डैमेज नहीं कुछ वहां पर, खुद जरूर डैमेज लिया उन्होंने। ये एसएल कंट्रोल ऐसा है जो आप पूरे राउंड तक पकड़ के नहीं रह सकते। मैच में स्पॉट जरूर किया था लेकिन X7 ने एंट्री दिलाई अपनी टीम को और ये बी साइड की भी एंट्री मिल चुकी है। एक फ्रैग मिल सकता था ज़िपिक्स, लेकिन शॉट मिस वहां पर। रलू ज्यादा मजबूत, एक और फ्रैग यहां से गई और ये होप्स बढ़ते हुए यहाँ फिर से के खाली डुप्री। पैसा जरूर है यहाँ पे एस्ट्रल के पास, बहुत सारा पैसा है। डुप्री यही चाहेंगे कि एक आधी गन और ड्रॉप कर दें, जितना डैमेज कर सकते हैं एंस की इकोनॉमी को उतना कर दें। पैसा बहुत है अंकित, टाइम नहीं है। सीधे फॉल बैक, ऐसी पोजीशन में जाना चाहते हैं जहां वो शायद स्किप कर सकें एक आधा फ्रैग लेके। जहां वो है वहां तो कोई
फिलहाल कोई नहीं आ रहा। क्लोजेस्ट ख्याल से यहाँ पे X7 रहेंगे या 7 शायद टीममेट की तरफ है कहीं तो। एंस का एक अच्छा राउंड यहाँ पर। ये मुझे शॉट देखना था जिपमिक्स के ऊपर, पता भी नहीं था वो स्कोप करके बैठे थे। जैसे मैं बोला था काफी पीछे से खेल रहे थे बी टेक, और ये साइड मेरे ख्याल से सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। इस साइड में जैसे ही फ्रैग मिला वैसे ही तुरंत बी चले गए। जैसे आईवी पे मैजिक्स मरे। राउंड बाय जरूर कर सकती है यहाँ पे डिवाइस, क्या आप बाय करेंगे? 3-3 का स्कोर। इक्वलाइजर 7वें राउंड में बोला कि ट्रेन जो है शेरिस का इतना स्ट्रॉन्गेस्ट मैप नहीं है रिसेंट टाइम्स पे। इन्फर्नो पे एंस की बहुत मुश्किल वहां पे परीक्षा हो सकती है। एंस का पहला टाइम आउट यहाँ पर। मुझे पता है क्या रीसेट नहीं होना फिर से, बोले चाहे उनका इकोनॉमी लेकिन रीसेट नहीं होना है। यही ट्राई करेंगे एटलीस्ट 2-3 राउंड इन अ रो जीते जाए, क्योंकि सिटी साइड पे जैसे पहले ही बोल चुके हैं काफी स्ट्रॉन्ग है एंस। कैसे उनको काउंटर करेंगे स्टालिस? मेन आपका जो एंटी स्टैट होता है वो सबके सिटी साइड में ही होता है। बिल्कुल सिटी साइड में बहुत ज्यादा मजबूत एंस अपनी ताकत उन्होंने पहले भी दिखाई है दूसरे टीम्स के अगेंस्ट भी। उनके हाथ में AUG तबाही की गन है। 3-3 का स्कोर यहाँ पर। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 7वें राउंड में। टाइम आउट यहाँ खत्म हो चुका है, राउंड शुरू होने वाला है। क्या कर रहे हैं एंस? देखने में खुद ही पता चल जाएगा। बिल्कुल हाथ में एक ऑप और 4 AKs यहाँ पर। बहुत फास्ट शॉट लेने की कोशिश वहां पर अलू की। काफी फॉरवर्ड मॉली करते हो, अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है। 7 यहाँ पे शायद क्या उन्हें पता है कि जस्ट बगल में ही उनके मैचेस के ये मोलोटॉव शायद पुश करने से रोकेगी, इसीलिए उन्होंने मोलोटॉव किया। इस राउंड 2 SL नहीं खेल रहे हैं। मैचेस यहाँ पर जीतते हुए फाइट। थोड़ी सी गलती वहां X7 से, उन्होंने एंटीसिपेट जरूर किया था लेकिन फाइट जीत नहीं पाए। सीवी जैसा देख रहे हैं कि सिर्फ वही अकेले उस मैप के उस पोजीशन में थे, बाकी सारे प्लेयर्स बी की तरफ। तो लग रहा है फिर से बी साइड होगा। एंस की कोई भी यहाँ पे कोई भी नहीं प्रेजेंट है साइड की तरफ। यहाँ पे लगता है कि 40 ने रीड कर लिया है। बिल्कुल रोटेशन से हो चुके हैं। 2 प्लेयर्स काफी क्लोज यहाँ पर बी साइड आ चुके हैं। ये मॉली जाएगा यहाँ पर, सर गए, लेकिन यहाँ पर बेहतर प्लेयर जिपिक्स डूपरी को एक फ्लैग मिला, बहुत जल्दी फ्लैंक पर आ चुके हैं। अब मुश्किल की घड़ी यहाँ पर 2v4। डूपरी की पोजीशन के बारे में बिल्कुल आइडिया है, लेकिन जिपिक्स यहाँ पे स्मोक से LXCB को मारते हुए अकेले बचे हैं। एरल किसी तरीके से स्नीक इन करने की कोशिश, एक फ्लैग जरूर मिलेगा, दूसरा नहीं मिल पाया। जिपिक्स स्मोक के थ्रू मारते हुए एरियल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। कल भी उन्होंने बहुत अच्छा क्लच निकाला था सिंपल का अगेंस्ट मैट, याद है 1v1 तो। बिल्कुल उस समय तो सिंपल क्या जबरदस्त सिचुएशन में लेके आए थे राउंड को। इस राउंड फिर से सेम चीज ट्राई करी थी मैट, कुछ भी डिफरेंट टाइप किया। X7 को आईवी भेजा, सिम को एक पिक निकालने के लिए, गलती से डिस्ट्रैक्शन कॉज करने के लिए कुछ तो रोटेशन आया वहां पे, और रिटर्न में वो लोग बी घुसे। लेकिन इस बार एस्ट्रेलिस ने पढ़ लिया था और ये राउंड बाय जरूर किया। मैक 10 या X7 के पास पैसा नहीं था उनके पास कुछ खास। बिल्कुल बी साइड पर सारे के सारे प्लेयर्स हाईवे लॉन्ग हॉल्स बी रिटेक खेल रहे हैं यहाँ पे। काफी पीछे से ये नेट काफी घातक साबित हो सकता था यहाँ पर। जिपिक्स को पूरा आइडिया सर गई यहाँ पर ड्रॉप के साथ ही। जिपिक्स को 2 फ्रैग यहाँ मिल चुके हैं। अलू को 1 फ्रैग जरूर मिला। X7 इस बार वेट कर रहे हैं, कोई फ्लैंक नहीं चाहते अपनी टीम के लिए। मैक 10 उनके हाथ, बॉम्ब प्लांट यहाँ जरूर मिलेगा। 3v4 कितना डिफिकल्ट होगा ये। सारी यूटिलिटी है यहाँ पे, कम से कम 2 मोलोटॉव है, बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे एंस के लिए साइट होल्ड रखना, स्पेशली यहाँ पे की प्लेयर X7 जो कि पीछे हैं। एरल को मजबूर किया उन्होंने निकलने के लिए। एरल ने जाते जाते 1 फ्रैग जरूर लिया। ग्लेव कितने रोक पाएंगे आप X7? बिल्कुल 1 फ्रैग जरूर लिया यहाँ पे। क्या नहीं, लेकिन नहीं, डूपरी सही टाइम पर बचाते हुए अपने टीममेट को। और राउंड भी बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन यहाँ पर एस्ट्रलिस का। अंकित बहुत मजा आ रहे हैं। ऐसे गेम्स इतने ज्यादा रोमांचक होते हैं।
यहाँ पर एस्ट्रलिस बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन एंस कम नहीं है। ये किसी से भी कम नहीं है। एंस यहाँ पर साबित करना चाहती है इस दुनिया को। जैसे मैं बोला था, फिर से रीसेट हुए 1900। इतना पैसा जरूर है इसके पास कि भाई कर सकते हो। इसी पे मिड पे पुश, डुप्री तुरंत मरते हुए, कोई ट्रेड नहीं उनका, बहुत ही गलत पुश शायद नहीं करना चाहिए था। 1 लाख जरूर मिलेगा वहां डिवाइस को। डिवाइस को पता है उनके जस्ट राइट में एलेक्सी भी है। मरते हुए 2 नेट्स वहां पर। इसको बोलते हैं बुली करना। जिस तरीके से वहां एलेक्सी भी को मारा गया है, बहुत बुरे तरीके से। लेकिन अच्छी बात है डिस्ट्रक्शन का किया, रोटेशन आया और इसी बीच यहाँ साइड पे प्लांट हो गए। चाहती थी यहाँ पे एंस, क्योंकि उनके पास नेक्स्ट राउंड इतना शायद अच्छी इकोनॉमी नहीं थी, लेकिन अभी आराम से वो $800 के साथ बाय कर सकते हैं और आराम से एस्ट्रलिस पूरा टाइम लेती हुई। 2v4 है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपके पास एडवांटेज है। स्पॉट के यहाँ पे सौगे और आलू दोनों को ही, और आलू एग्रेसिव जा रहे हैं काफी। एक आधा फ्रैग लेना चाहेंगे, शायद ले भी ले। 1 लाख जरूर मिला उन्हें, लेकिन रीलोड पे और यहाँ काफी सारे शॉट्स मैचेस मिस करते हुए, लेकिन पिस्टल से तुरंत निपटाया उन्होंने आलू को। और एक और राउंड यहाँ एस्ट्रलिस जीते हुए, लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात है एनसे के लिए कि उनका बाई जरूर हो जाएगा। और ये राउंड अपने मैट में देखा, शायद नोटिस ना किया, वहां पे किट खाली जिपनिक्स के पास थी। गलती से उमर जाते कहीं पीछे तो बहुत मुश्किल होता है किट रिट्रीव करना। बिल्कुल। इन द लास्ट 3 months on train, Astralis display 80% wins on the CT side। 80% यहां पर जीत रही है CT की लास्ट 3 महीनों में, जिस तरीके से जो स्टैट्स कहते हैं। लगभग 11-4 के हाफ। बिल्कुल। यहाँ पे बाय जरूर किया, जैसा बोले थे लास्ट राउंड। काफी यहाँ पे आलू के पास भी हेड आर्मर है, लेकिन यूटिलिटीज बहुत कम। पास रह रहे सगे को तुरंत डिनाई करते हुए फिर से X7 यहाँ पे अकेले आईवी पे। कोई नहीं है, लेकिन इस बार कोई भी बी साइड की तरफ नहीं है। यहाँ पे मिड और आईवी फोकस है, ये स्प्लिट कर सकते हैं। ये अच्छा नेट हो सकता था। दबाव वहां पे काफी दबाव डाला जा रहा है टीम इंच के पास। बिल्कुल आगे निकलने का मौका नहीं मिल रहा आलू को किसी भी तरीके से शॉट लेने का। एरन उन्हें एक फ्लैश देंगे तब अब वो पीक करेंगे। इसी बीच X7 की पोजीशन देखिए, तो उन्होंने साथ अपने असिस्ट करने के लिए बुला लिया है यहाँ पे एलेक्सी को। टूपी यहाँ पर कुछ क्षति पहुंचाते हुए सर्गई को 60 HP पे आ चुके हैं सर्गई। और राउंड जैसे जैसे ऐसा खत्म हो रहा है, वैसे वैसे एस्ट्रालिस थोड़ा पीछे जा रहे हैं। और ग्लेव का एक अच्छा फ्रैग और फ्लैश जरूर हुए थे, फ्लैश इतना अच्छा नहीं। और ग्लेव को जल्दी बैकअप चाहिए, 50 HP। उनको राइट से फटाफट फ्लैंक किया जा रहा है। ग्लेव फिर भी स्पॉट करते हुए, और जब ट्रेड किया जिपनिक्स ने, ग्लेव को एरिया अभी भी है के ऊपर। ये गलतियां बहुत ज्यादा होते हुए, लेकिन सर्गई यहाँ पर किसी तरीके से बचते हैं। जिपिक्स तुरंत ट्रेड किया उन्होंने। अलू वर्सेस 3 प्लेयर्स ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सके। अलू कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं इस गेम में अंकित। अभी तक तो नहीं, लेकिन आप अलू को जानते हैं, पिछले राउंड में बहुत अच्छा किया था, सेकंड राउंड में भी किया था मैक 10 से। कुछ भरोसा नहीं, कभी फॉर्म में आ सकते हैं। बिल्कुल 7-3 का स्कोर। यहाँ पर 4 राउंड का डिफरेंस हो चुका है। सब दूसरा टाइम आउट अपना लेते हुए ये सोचने की कोशिश की हम कहाँ हार रहे हैं, हमें क्या अच्छा करना पड़ेगा कि हम जीते। शायद अभी जिस तरीके से इनका फॉर्मेशन चल रहा है, जनरली X7 को एली पर भेजते हैं, आईवी पर माफ कीजिएगा। वैसे अगर 1.6 की बात की जाए तो उसे एली भी बोला जाता था। और 4 प्लेयर्स बी पर प्रेशर बना रहे हैं। अभी तक एसएल का कंट्रोल नहीं मिला है अंकित ने। एक राउंड भी एसएल और पॉपडॉग का कंट्रोल प्रॉपर नहीं है इनके पास। पॉपडॉग पे पहले 2 प्लेयर्स खेल रहे थे एस्ट्रलिस के, अभी अकेले डुप्री खेल रहे हैं। उसके बाद भी कोई प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं किया जा रहा है उनको फॉल करने के लिए। एक मॉली जरूर डालते हैं, लेकिन प्रेशर नहीं दे रहे हैं कि वो फॉल करें और पॉपडॉग से एंट्री मिले। इसी कारण से ए साइड पर इनको एंट्री इतनी अच्छी नहीं मिल रही। एसएल पे बार बार हमेशा 2 लोग खेल रहे हैं, जो कि 2 लोग शुरुआत के 1.5 मिनट कभी भी छोड़ते नहीं है। उसके बाद एंड में जरूर यहाँ पे X7 फिर से क्लेम, इस बार टाइमिंग मिलती है उनको। फाइनली यहाँ पे एंट्री मिलती है। इस बार 2 पॉपडॉग नहीं खेल रहे थे, जो कि सही डिसीजन था। तो सामने पिस्टल्स हैं, ये देर यहाँ पे एक X7 के पास ही है भाई, किसी के पास कुछ भी खास नहीं है। आर्मर सभी ने बाय किया। एक और फ्रैग मैजेस के पास, जिपनिस के 2 फ्रैग काफी ऊपर, जिपनिस के तीसरे फ्रैग यहाँ पे, क्योंकि राउंड लग रहा था 5v3 जीत सकती है एंस सिट भी, जिसको 2v2 होता था फाइनली।
सीधे बैकफुट पर आती हुई यहाँ पर एस्ट्रलिस। दोनों प्लेयर साथ में खेलना चाह रहे हैं। डुप्री बहुत लो 8 HP पर, डिवाइस अकेले हैं ऑप के साथ और वही सामने आकर खेलने की कोशिश करेंगे। अगर यहां पर X7 थोड़ी सी गलती होती है तो शायद डिवाइस उन्हें स्पॉट कर ले, लेकिन सही समय पर वहां मूवमेंट अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं पॉप डॉग से एक प्लेयर वेट कराना चाहते हैं। कोई प्लेयर पॉपकॉर्न या कहीं से भी वी मार्क कर रहे हैं यहाँ प्लांट हो जाए। मिल गया प्लांट। ये राउंड निकलना भी डुप्री अभी भी सोच रहे हैं कि शायद बी साइड हो सकता है। फाइनली यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया उन्होंने कि ए साइड ही प्लांट होगा। डिवाइस को शायद साउंड नहीं आया, डिवाइस अकेले काफी, और X7 यहाँ पर लो हो चुके हैं अब, और मुश्किल की घड़ी किस तरीके से क्लच करेंगे। आईवी क्लियर है, ये यहाँ एस्ट्रलिस को पूरे अच्छे से पता है। एक फ्रैग मिला को 25 HP यहाँ पे डिवाइस के सामने। क्या डिवाइस को एक्सपेक्ट करेंगे इस एंगल पे? जी हाँ, जल्दी पैर दिखते हुए, लेकिन डिवाइस मारा जरूर, हाथ में किट भी है। टाइम नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी, और सेव करने में भी नाकामयाब होंगे। बहुत अच्छा राउंड यहाँ इसका, बड़ी देर हुई आने में, लेकिन आया। देर आया पर दुरुस्त है। ये राउंड फिर से ये पिस्टल राउंड्स बहुत डेंजरस साबित हो जा रहे हैं, और अच्छी बात रहती है X7 को फाइनली वहां पे स्पॉन मिला एसएल जाने का, क्योंकि इतनी देर से ग्लेव और ड्यूप्री डबल चेक कर रहे थे वहां पे। पॉप डॉग की बात कर रहे हैं आप या फिर पॉप डॉग कंट्रोल? लैडर रूम, पॉप डॉग, डबल ऑप यहाँ पे मैजिक और डिवाइस दोनों के पास। मैजिक मेरे ख्याल से बी पे सोलो, जी नहीं तो लग रहा था शायद वो बी पे सोलो करेगा। अभी भी अपने फेवरेट पोजीशन यहाँ पर एसएल का पॉप डॉग का कंट्रोल लेते हुए। फिर से आईवी, फिर से अकेले मैजिक की पोजीशन मार्क कर रहे हैं आप लेके, क्योंकि मैजिक को 3 बार मार चुके हैं वो आईवी पे। बिल्कुल यहाँ मैजिक, लेकिन इस बार बिल्कुल अच्छे से तैयार है, ऑफ लेकर हाथ में बैठे हैं किसी भी तरीके की पीक, और X7 को यहाँ तुरंत इंस्टा डेथ अवॉर्ड कर सकते हैं। हेलो राउंड काफी फॉरवर्ड, फिर से अप्रोच सेम है, तो एसएल के ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। फिर से एग्रेसिव है लास्ट राउंड की तरह। ये यहाँ पे साथ में पॉप डॉग की भी ओपनिंग दे दी है इन्होंने, लेकिन अगर तुरंत अभी देखा जाए तो ग्लेव रोटेट कर चुके हैं। पॉप डॉग जानते हैं कि खाली ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन जिस तरीके से मैं बोल रहा था कि मैजिक X7 को मारेंगे, वही हुआ है। यहाँ पर बेट गेम काफी चलता हुआ, लेक्सी भी पिक करने की कोशिश, थोड़ा डैमेज जरूर लिया लेकिन तुरंत फॉल किया है, और ग्लेव सैंडविच हो गए। अगर वहां पे आगे रहे तो सैंडविच हो जाएंगे, इसलिए से अच्छी बात है कि पीछे फॉल बैक कर रहा है। मैजिक ने फिर से स्पॉट किया है। अलू थोड़ा भी अगर अपने लेफ्ट में आए तो काट दियाएंगे, और शॉट मिस किया वहां पे। शॉट मिस, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ पर आप आधे राउंड हार जाते हैं। फ्लैश किया गया, एरल पीक किया जरूर उन्होंने, लेकिन गलती उनकी, ऑफ के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया। ग्लेव काफी लो, शायद स्पॉट हो चुके हैं। ग्लेव अच्छी पोजीशन, वहां पर एक फ्रैग जरूर मिला उन्हें, लेकिन अलू ज्यादा तैयार उनसे। नहीं मिला यहाँ पर, अलू अभी भी जिंदा है। मात्र 1 सेकंड बाकी है राउंड के बाद बने यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पर ना पैसे, ना गन, ना राउंड, कुछ नहीं कर पाए। ये एक निराशाजनक राउंड एनसे के लिए। ये राउंड फिर से सेम किया था, इस बार लेट। उनको पता है कि लेट पॉप डॉग कंट्रोल मिलेगा, क्योंकि अर्ली में शुरू में तो पूरा स्टैक रहता है। इस बार थोड़ा अलग किया था। ड्यूप्री और ग्लेव जो कि हमारे साथ खेल रहे थे, ड्यूप्री मिड देख रहे थे और ग्लेव जो है एसएल देख रहे थे। एसएल के अंदर से नहीं, थोड़ा सा बाहर से, बॉक्सेस के बाहर से, लेकिन जैसे ही ड्यूप्री मरे ग्लेव को फॉल बैक करना पड़ा, क्योंकि उनके एस्ट्रलिस का पहला टाइम आउट। यहाँ देखने वाली बात है कि एस्ट्रलिस यहाँ क्या सोच रही होगी। ज्यादा राउंड के डिफरेंसेस नहीं है। आठ 4 एंस अभी भी वापस आने की कोशिश यहां पर।
यहाँ एलेक्सी भी अभी भी वेट कर रहे हैं पॉप डॉग पर। यहाँ पर डुप्री इस बार पॉप डॉग का कंट्रोल नहीं ले पाए थे। अच्छा फ्रैग यहाँ पर, एलेक्सी भी ऑलरेडी एक फ्रैग ले चुके हैं, काफी लो है यहाँ पर। ग्लेव वेट कर रहे हैं किसी भी तरीके की पीक अगर हो। मैजिस भी यहाँ पर बहुत कंफ्यूज, शॉट मिस। वहां एक फ्रैग जरूर मिलेगा यहाँ ग्लेव को, दूसरे शॉट में नाकामयाब, लेकिन डिवाइस तुरंत अपनी टीम को सपोर्ट करने, 2 फ्रैग्स वहां पर कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहा एंस के लिए। एक फ्रैग जरूर मिला डुप्री को, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग सा राउंड ये रहा सीटीज के लिए। हर तरफ से उन पर अटैक हुआ, लेकिन सही टाइम पर अटैक रोका गया। डिवाइस बहुत स्ट्रांग वहां पर। एक 52-51 घड़ी चल रही है धीरे धीरे। 9-4 का स्कोर, यहां डिफरेंसेस भी बढ़ रही है। यहां पर अलू इसी बीच एक शॉट उन्होंने सीधे सर पे मारा है डुप्री के। काफी सारे शॉट्स डिवाइस के मिस होते हुए तुरंत फॉल बैक किया उन्होंने। ग्लेव अच्छी पोजीशन पर, यहां पॉप डॉग का कंट्रोल। अब थोड़ा स्लो होते हुए यहां पर एनसी की टीम। मैजिक्स अभी भी वेट कर रहे हैं, अगर X7 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार X7 नहीं है, अलू है यहाँ पर। क्या अलू कुछ यहाँ पर अलग कर सकते हैं जो कि X7 नहीं कर पाए काफी सारे राउंड से? अलू ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं, मुश्किल हो सकती थी मैजिक्स के लिए, लेकिन नहीं, मैजिक्स ने उन्हें मारा। और ये फिर से सेम स्ट्रैटेजी पीक करने की मुश्किल बढ़ी जा रही है या मैजिक्स के लिए। एग्रेसिव जाने की कोशिश मैजिक्स से, 2 और फ्रैग्स यहां पर, 4 फ्रैग्स के साथ राउंड इजीली एस्ट्रलिस के खाते में आते हुए। और मैजिक्स काफी अग्रेसिव खेल रहे थे वहां पे आईवी पे, क्योंकि उनको शायद आइडिया था कि यहाँ पे एंस के पास खाली पिस्टल्स हैं, जस्ट रीसेट हुए, तो काफी अग्रेसिव खेल रहे थे उधर, क्योंकि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। यही रीजन है कि उनको शायद लगा X7 अकेले आते, इस बार उनको अकेले मारते नहीं, X7 की जगह इस बार आलू है, लेकिन हाँ वो अकेले ही थे तो ट्रेड हो गए अलू का। लेकिन ये पहला एंट्री शॉट यहाँ पर काफी अच्छा था, इलेक्ट्रॉनिक ई बॉक्स के पास। इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स इस राउंड फिर से मैजिक्स अभी भी वेट कर रहे हैं यहाँ पर आईवी के पास, हलचल बढ़ते हुए। एसएल के ऊपर मार्क कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इसी बीच मैजिक्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है वहां पर, सीधे 50 HP पे आ गए। धीरे धीरे राउंड का टाइम कम होते हुए 6, 5, 4, 3, 2, 1 और सिर्फ 1 मिनट बचा है अब। 10-4 का स्कोर। क्या एक और राउंड एंस अपने टीम को जीत की आशा बरकरार रखने में कामयाब होंगे? काफी स्लो इस बार, लेकिन ऑफ कर पकड़ा है वहां पे मैजिक्स, अलू, X7 दोनों ने मिलकर मारा है। काफी जबरदस्त जिपेक्स, अलू का फ्रैग जरूर मिला उन्हें, लेकिन ग्लेव इधर ट्रेड किया उन्होंने। जिपेक्स अभी भी जिंदा। डुप्री 2 फ्रैग, एरल यहाँ टीम किल। बहुत गलत। एरल खुद भी काफी लो हैं, स्पॉटेड हैं, उनकी पोजीशन 1v2। एक नेड की देरी और काम खत्म, लेकिन डुप्री यहाँ पर नेड की जरूरत नहीं। काफी एक्साइटेड यहाँ पर एस्ट्रालिस के कोच। 11-4 से पहला हाफ चेंज होता हुआ। वापस आएंगे हम अगले हाफ में, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, 2 मिनट।
और स्वागत है आप सबका यहाँ पे पहले मैप के दूसरे हाफ में, जहां पर एस्ट्रलिस लीड कर रही है 11-4 से ट्रेन, और अब आई है इनफेमस एंस अपनी सीटी टीम में। अब देखते हैं क्या कमाल दिखा सकते हैं। हमने बड़े बड़े कमबैक यहाँ पर देखे हैं एंस के, काफी एग्रेसिव यहाँ पर ए का रोटेशन एंट्री मिल चुकी है, काफी एग्रेसिव यहाँ पर 5 प्लेयर्स, बहुत ही एग्रेसिव, लेकिन X7 यहाँ पर अच्छा शॉट, जिपिक्स को डाउन किया उन्होंने। C4 ड्रॉप होता हुआ सिविच अलू को मरते वहां पे साउंड दे देता, मैचेस का एक और फ्रैग, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डुप्ली अकेले बचे हैं, काफी डैमेज दे रहे हैं 59 एचपी पर, और ये गलत होता हुआ, लेकिन एरल रेस्क्यू के लिए आए पहला राउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था एनसी के लिए। और अब दूसरे राउंड से ही तबाही मचानी शायद शुरू हो सकती है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे एस्ट्रालिस को C4 प्लांट मिला नहीं है, तो शायद वो प्योर इको भी करने जाने वाले हैं। तो जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था अंकित, 11-4 का स्कोर वैसा ही चेंज हुआ। 11-4 हम बोले थे 80% डाउन, 80% तो हमने बस प्रेडिक्ट किया कि 11-4 वही हुआ एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर पहला राउंड MP9 UMPs काफी एग्रेसिव यहाँ पर X7 एली काफी पसंद करते हैं, लगता है अपने टी साइड में भी एली ही कंट्रोल लेने की कोशिश। यहाँ पे आलू शॉट जरूर मिस किया, डैमेज अच्छा खासा लिया है उन्होंने, 25 एचपी पर 75 का डैमेज। यहाँ पे एस्ट्रालिस मेरे ख्याल से सिर्फ साथ में जाना चाहते हैं, एक आधा किल मिले तो ठीक है, वरना बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर तबाही मचाते हुए X7 बिल्कुल 12 एचपी पे किसी तरीके से बचे रह गए वहां पे मैजिक्स। उनकी पोजीशन एकदम बिल्कुल रिवील्ड है, बहुत मुश्किल यहाँ पर उनका बचा रहना, उनको फाइट लेना ही पड़ेगा क्योंकि उन पे हर तरफ से अटैक होगा। एलेक्सी भी बिल्कुल भी गलती नहीं करते हुए वहां पर मैजिक्स को मारा उन्होंने, और बहुत ही शानदार वहां 3 फ्रैग्स X7 के, एक और राउंड का डिफरेंस कम करते हुए इनसे यहाँ पर 6 राउंड्स। अब क्या करेंगे ऑग, क्योंकि यहाँ पर अभी भी वेट कर रहे हैं। MP9 अभी भी होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे ये अभी पता चले। होल्ड करना चाहिए क्योंकि क्लोज एंगल के आपको चांसेस यहाँ मिलते हैं इस मैप पे।
फाइनली यहाँ पे बाय करते हैं पहला गन राउंड यहाँ पे एस्ट्रालिस का टी साइड में बहुत क्रूशियल है। MP9 ड्रॉप की है अगर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ ऑटो शॉट गन और एक नहीं MP9 ड्रॉप नहीं किया, माफ कीजिएगा एलेक्सी भी अभी भी होल्ड कर रहे हैं MP9। ये राउंड बहुत क्रूशियल यहाँ पे, अगर ये राउंड जीतती है तो मेरे ख्याल से कमबैक का जो हम बोल रहे थे वो सिलसिला चालू हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर एस्ट्रालिस जीती है तो आप जानते हैं क्या होगा आगे। यहाँ डिवाइस के हाथ में देखें आप SG553 मैचेस के यहाँ 50 HP, शुरुआती राउंड में इतना डैमेज लेना आपको मुश्किल में डाल सकता है। X7 स्पैम मारने की काफी कोशिश वहां पर, लेकिन कोई प्लेयर मौजूद नहीं। धीरे धीरे यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से यूटिलिटीज के मामले में बात करें तो अभी सिर्फ एक स्मोक यहाँ बचा है टीटीज के पास, और 3 फ्लैशेस, 2 मॉलीज और 1 हैंड ग्रेनेड। डिवाइस अपनी बिना स्किन वाली गन को इंस्पेक्ट करते हुए बहुत ज्यादा स्लो, बहुत ही ज्यादा स्लो। यहां पर 34 सेकेंड्स बचे हैं राउंड में, और अब तो कुछ ना कुछ मूव यहां करना ही पड़ेगा एस्ट्रालिस को। आगे बढ़ रहे हैं, सीटी का कंट्रोल लेने की कोशिश, लेकिन X7 तुरंत फ्रैग लिया, मैजिस को उन्होंने डाउन किया है स्मोक से, और ये बी पर प्रेशर बनाने की कोशिश। यहां पर डिवाइस एक फ्रैग जरूर मिला, लेकिन ग्लेव बहुत ही स्ट्रांगली X7 पोजीशन ग्लेव की यहां पर पता है एक फ्रैग मिला। 2v1 हो चुका है, इरल ने एक फ्रैग जरूर लिया है, वहां पर डिवाइस को मारा है। ये T4 यहां डिफ्यूज हो रहा है, ग्लेव को आइडिया है लेकिन कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल उनके हाथ से बाहर। एक और राउंड यहां पर जाता हुआ एनसे के हाथ, 7 राउंड्स। Zipex क्लच माय हार्ट, इजी पीजी। Zipex के अच्छे फैन बाई की बात करें तो यहां पर फोर्स बाई किया है एस्ट्रालिस ने। 2 डीगल्स, 1 गलल, एक AK, एक UMP। राउंड के डिफरेंसेस धीरे धीरे कम होते हुए, मुश्किलें बढ़ती हुई हैं एस्ट्रालिस के लिए। बिल्कुल नहीं चाहेंगे यहां पर हारना एक भी मैप, और ये फ्लैश के साथ पीक करने की कोशिश, लेकिन दीवार से हटके वहां पे एरल बहुत गलत जाता हुआ उनके लिए, तुरंत फॉल करने पे मजबूर। 3 प्लेयर्स वहां पे थे पॉप डॉग पर। एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतने सारे लोग उनका इंतजार कर रहे होंगे। मैजिस अभी भी मेंस के बाहर, और ये फॉल करती हुई यहां पर स्लोली। ए का गेम यूटिलिटीज अभी तक कहीं भी नहीं फेंकी गई थी, और अब ये यूटिलिटी का यूज होगा। ए एग्जीक्यूशन का एक फेक स्मोक रेडी है यहां पर बी पर, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं यहां पर कि 2 प्लेयर्स वेट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़े गए यहां पर डिवाइस को, लेकिन मारने में नाकामयाब। एलेक्सी भी अभी तक ये बहुत गलती हुई है उनसे, बहुत बड़ी, क्योंकि तुरंत उनको डिवाइस ने खत्म किया है। मैजिस की पोजीशन के बारे में आइडिया नहीं है। अलू बहुत रिस्की हो सकता है, बिल्कुल मैजिस ने अलू को मारा है वहां पे। सर्गेई 1v3 होता हुआ मैट यहाँ पे अकेले कि उनके पास जरूर है, लेकिन 1v3 बहुत बड़ा होगा यहाँ पे। इकोनॉमी भी अच्छी नहीं है इसकी, अगर आप देखेंगे तो चाहे 4 राउंड इन रो जरूर जीती है, 3 राउंड इन रो जरूर जीती है। कहेंगे कोई भी एग्जिट फ्रैग अगर उन्हें मिल जाए बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल 11-7 अब सेव ही करना है इनको। जिस तरीके से हम राउंड के डिफरेंसेस कम होने की बात कर रहे थे, एस्ट्रालिस ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है एंस को कि हम
इतना आसान नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे लिए। अगर आपको हमसे जीतना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये डिवाइस का यहाँ जो फ्रैग एलएक्सपी पे था, एलएक्सपी पे, वो एलएक्सपी उन्हें पहले ही मार सकते थे, ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाए, सिर्फ 43 HP पे ही ला पाए थे डिवाइस को। और डिवाइस को थोड़ी सी बुलेट्स लगना मतलब उनको घायल करना, और घायल शेर बहुत ही खतरनाक होते हैं। एंस का यहाँ तीसरा टाइम आउट। शायद इस राउंड बाय भी नहीं है, यहाँ पे रियल के पास जरूर कुछ पैसे हैं। अलावा सर्गियो 67 यहाँ पे सर्गियो ने किट और हेडर में बाय किया, तो मैं इससे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ उन्होंने ड्रॉप भी दिया है। जी हाँ, सर्गियो के लास्ट राउंड सेव किया था, लेकिन हाँ बाय पे जा रहे हैं। एक राइफल और आ सकती है यहाँ पे सर्गियो के पास, 67 के पास शायद थमास और आर्मर आ सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मेरे ख्याल से। शायद यूएमपी और यूटिलिटीज पे थोड़ा डालेंगे, लेकिन एलएक्सपी के यहाँ पर सिचुएशन खराब, बहुत कम पैसे थे उनके पास, तो उन्होंने सिर्फ सीजी ही लिया है। बिना आर्मर के X7 ने AUG बाय किए यहाँ पर लॉन्ग। ओ शॉट वहां पर सर्गे खड़े खड़े देखते ही रह गए। डिवाइस को पता भी नहीं कि उन्होंने क्या किया है वहां पर। सर्गे काफी लो। बी का एग्जीक्यूशन यहां एक्सपेक्ट कर रही होगी एस्ट्रलिस की, शायद फोर्स बाय है, लेकिन गन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी। और सबसे बड़ी बात है, आप अगर बात की जाए X7 ने ऑग क्यों ली है बिना आर्मर के। तभी भी जनरली आप जब भी राइफल्स यूज करते हो आप आर्मर्स लेते ही लेते हो। उसका रीजन ये है कि आप ऑग से लॉन्ग रेंज भी फाइट ले सकते हो। ओ बहुत मुश्किल वहां पर आलू के लिए डुपरी को मारना। 18 HP पर जिंदा रहे वहां पर, और 3 ही प्लेयर्स बचे हैं। और फिर से सेव, बिल्कुल सेव। एलएक्सपी को कहती गन मिल जाए तो वो अच्छी बात है, क्योंकि बाकी 2 प्लेयर्स के पास तो गन्स हैं, लेकिन उनके पास तो अभी तो वो भी नहीं है, खाली सीजर से खेल रहे हैं। एक स्मोक और एक फ्लैश। और ये राउंड सबसे बड़ी गलती जो थी कि ऑफ गार्ड पकड़े गए पूरे के पूरे, स्पेशली सर्गे पूरे ऑफ गार्ड, उनको शायद एम करने का ढंग से मौका भी नहीं मिला। सर्गे ऑफ गार्ड, सर्गे की हालत ऐसी थी कि राउंड के शुरुआत में डिवाइस ने आकर उनको जो शॉट मारा है स्पैम में, वो उसी समय उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि अब क्या करें, क्योंकि उनकी पोजीशन इतनी अच्छी थी, वो वहाँ से पीक भी नहीं कर सकते थे। या वही बोल रहे हैं कि जंप पिक एक्सपेक्ट करना चाहिए, और पूरी तरीके से ऑफ गार्ड, कुछ चांस ही नहीं था उनके पास, और काफ़ी पीछे भी थे जो कि स्पैम लगा। क्या बाय करेगी एंस 13-7, अगर नहीं बाय करते तो शायद और चांस मिल सकता है। यहाँ पे बाय करेंगे तो लास्ट बाय भी हो सकता है। तो फ्रैग हलू खुद से हताश निराश दिखते हुए राउंड शुरू होता है यहाँ पे। तेरह 7 बोर्ड पर टाइम है अभी 33, 32, 31, 30, 29। धीरे धीरे टाइम कम होता हुआ यहाँ पर सर्गे गलती करते हुए काफी एग्रेसिव, P2000 हाथ में सिर्फ डुपरी, सर्गे को मारा उन्होंने। काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ X7 ने अभी तक स्पॉट नहीं किया है। X7 की साउंड यहाँ जरूर आई होगी ग्लेव को, और ये तुरंत काउंटर फ्लैश वहां पर, और X7 को मार दिया गया है मैजिस ने। 1 मिनट 1 सेकेंड, 1 मिनट बचा है सिर्फ अब राउंड में, और अब बॉम्ब प्लांट हो रहा है। काफी टाइम मिला है यहाँ बॉम्ब प्लांट करने के लिए। एक फिर से एक राउंड सेव, एक और राउंड यहाँ पे एक्शन बाय हो गया यहाँ पे, काफी अच्छा वो भी। अलू को एक फ्रैग जरूर मिला है, एलएक्सपी ने भी एक फ्रैग लिया है। 2v3 कहीं से आ चुका है ये राउंड। क्या अभी भी कोशिश करने वाले तो नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि कोशिश करेंगे। कोशिश करना चाहिए भी नहीं। ऑप यहाँ पर सिक्योर की है एलएक्सपी ने। एक फ्रैग जरूर मिल सकता है। मैचेस यहाँ आ चुके हैं, लेकिन
सही समय पर स्मोक जाता हुआ, ये गन सेव नहीं कर पाए, वहां पर ऑफ सेव नहीं कर पाए। एरल ने मारा, 2 फ्रैग जरूर लिए, लेकिन एलेक्सी भी वहां ऑफ नहीं बचा पाए अपने टीममेट के लिए। क्या यहाँ पे एक फिर से टैक्टिकल पॉज देखने को मिल सकता है मैट? मुझे नहीं लगता इतने क्विक सक्सेशन में यहाँ टैक्टिकल पॉज लेगी एंस। तो 14-7 का स्कोर और एस्ट्रलिस बहुत ही स्ट्रांग यहां देखते हुए। ओह लेकिन अलू डिवाइस को वहां हमारा ग्रैंड फाइनल से ये हमारा अभी भी इरादे मजबूत। एक फ्रैग दोनों टीम से जा चुके हैं, लेकिन एलेक्सी भी अभी भी वेट कर रहे हैं किसी तरीके से साइट पर अगर किसी भी तरीके से कोई पीक हो पॉप डॉग से, बहुत एग्रेसिव स्मोक के पीछे जाकर। फ्लैश तो यहां नहीं होंगे X7, लेकिन मैचेस जरूर फ्लैश हुए वहां। बहुत अच्छा फ्लैश, डुप्री अभी भी जिंदा। 2v3 डुप्री के पास यहाँ पे एक रॉट ऑफ जरूर थे, लेकिन X7 की पोजीशन के बारे में कोई आइडिया है क्या? बिल्कुल आइडिया था वहां, डुप्री को एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरीके से उन्होंने पीक किया। सीधे सिचुएशन यहां पर गड़बड़ होते हुए 2v2 का सिचुएशन है। थोड़े लो जरूर है यहाँ डुप्री, लेकिन अभी भी हाथ में उनके C4 और जिपिक्स आ चुके हैं साइड की तरफ। और यहाँ पे बी साइड में अगर देखा जाए तो कोई भी नहीं है मैट। बी साइड पर अब रोटेशन इजी हो सकता है, प्लांट यहाँ जरूर मिल जाएगा। जिपिक्स अच्छी पोजीशन पर आ चुके हैं ऑलरेडी, अगर देखें तो काफी एग्रेसिव आ चुके हैं हाईवे से निकलकर, और अभी तक कोई अंदाजा नहीं कौन प्लांट है जिनको ऊपर छोड़ दिया गया है, ऊपर चढ़ के बैठे हैं। बिल्कुल यहाँ अभी भी एनसे एक्सपेक्ट कर रही है ये प्लांट, यहाँ पे ये प्लांट हिट जरूर है, तो यहाँ पे ये मोलोटॉव काफी नुकसान पहुंचा सकता है ये, लेकिन सिर्फ नुकसान ज्यादा टाइम को पहुंचाएगा अंकित। एक स्मोक जरूर था वहां पे एलेक्सी के पास, लेकिन उन्होंने नहीं यूज किया। वो स्मोक होल्ड करना चाहते हैं कि अगर उनको साइड पे ये नेट डेंजरस हो सकता था। ये मॉली जरूर जाएगा, ये मोलोटॉव कहां का है, प्लांट कहां का है? आप ये देखिए, क्या ये डिफ्यूज होगा? बहुत ही नेल बाइटिंग डिफ्यूज हो सकता है ये। जी हाँ बिल्कुल, और ये 8 राउंड यहाँ पर संयम से खेल यहाँ पर खेलना काम आया है एनसे के लिए अंकित। और क्या सबसे बड़ी गलती वहां पे जो है, शायद डिवाइस को अंदाजा नहीं था कि वहां पे प्लांट नहीं है। जितनी थोड़ी देर में बताया होगा, वो खुद की मॉली से जलते हुए आगे गए। आपकी जगह मोलोटॉव यहाँ पे फेंका था, लेकिन उनको शायद अंदाजा नहीं था, क्योंकि उस मोलोटॉव से मैट उन्होंने अपनी पोजीशन भी दे दी और सामने उनको बता भी दिया कि मैं ऊपर हूं। उन्होंने शॉट बेट करके, शॉट चला के बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन तुरंत इंस्टेंट यहाँ पर लिया गया है टाइम आउट अंकित। बिल्कुल ऐसी गलतियां एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद आप टाइम आउट सिर्फ इसलिए नहीं लेते हैं कि आपको आगे की स्ट्रैटेजी सोचनी है, आप टाइम आउट इसलिए भी लेते हैं कि काम डाउन, रिलैक्स। हम लोग सिर्फ 2 राउंड पीछे हैं, हम लोग अभी भी जीत सकते हैं, चिंता वाली बात नहीं है। आपको किसी भी तरीके की नर्वसनेस की जरूरत नहीं है। वो मोलोटॉव खुद की पोजीशन थी और सके पूरा अंदाजा था वहां पे, और फॉर्चुनेटली उनके पास ही मोलोटॉव थी उस टाइम। और मैच को देखिए काफी खुश दिखते हुए, क्योंकि उनको शायद अंदाजा, उनको भी शायद पता था कि C4 प्लांट वहां का नहीं है। बिल्कुल, ये थोड़ी सी खुशी, थोड़ी प्रीमैच्योर्ड हैप्पीनेस। यहाँ पे अच्छा फ्लैश। अभी तक ग्लेव इस मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए हैं, तो यहाँ पे पहली बार में कैसे बी साइड में काफी एग्रेसिव राउंड की शुरुआत में ही, इसके पहले जब एग्रेसिव गए तो स्ट्रेट वे बी बना लिया था। सिर्फ मिड की तरफ मैजिस्क, बाकी कोई भी प्लेयर का दूसरी तरफ कोई भी प्रेजेंस नहीं है, ऐसा लग रहा है स्प्लिट। लेकिन ग्लेव अच्छा फ्रैग लेते हुए एरियल को, खाली यूएमपी था, फ्लैश थे पूरे, कुछ नहीं कर पाया। एलेक्सी भी का अच्छा फ्रैग जरूर है, एक और फ्रैग, लेकिन मेन प्ले बी की तरफ सर्गे का एक फ्रैग ले पाए जिपिक्स, लेकिन तुरंत वहां पे ट्रेड किया उन्होंने। बहुत ज्यादा स्प्रे मिस हुआ वहां पर सर्गे का। ये मुश्किल की घड़ी आ सकती है, लेकिन अलू शायद स्पॉट करने में कामयाब होंगे। पैर दिखते हैं उधर से, पैर दिखे हैं, दिख चुके हैं इनको, और
बिल्कुल जो बात देखने की बात की थी, लेकिन डिवाइस कैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अलू को वहां पर अकेले बचे हैं। मैचेस क्या क्लच कर पाएंगे? नहीं, एक और राउंड यहां पर एंस जीतते हुए, और ये है अच्छे खेल का प्रदर्शन एंस से। कमबैक, एनसी कमबैक किंग। इस टूर्नामेंट में 5 कमबैक कर चुके हैं मैडे, 5 बार। 2 तो हमने कल ही देखे थे। बिल्कुल कमबैक किंग्स होते जा रहे हैं इनसे। क्या वो एस्ट्रलिस के अगेंस्ट भी वो सेम जादू दिखा सकते हैं? ये अच्छा फ्रैग था। क्या निप मैजिक के बाद इजी फॉर एनसे ये हो सकता है? मैंने ट्विटर पे किसी एक प्रो ने पोस्ट किया कि उन्होंने अलू को मैसेज किया कि अगर एंस फाइनल में आप जीत जाते हैं तो मैं अपने बॉडी पे परमानेंट टैटू बनवाऊंगा इजी फॉर एंस से। वो अके दोस्त थे एनआईपी गेमिंग के वीडियो एडिटर। बिल्कुल, और उस चीज का स्क्रीनशॉट लेके अलू ने पोस्ट किया है। जी हाँ, बेस राउंड बाय करने के लिए पैसा जरूर है एस्ट्रालिस के पास। और क्या यहाँ पूरी तरह से इन्वेस्ट करेंगे? जी हाँ, यहाँ डिवाइस के पास कुछ खास पैसे नहीं थे जैसा लग रहा था, लेकिन वो यूएमपी ड्रॉप देके शायद उनको ऑफ मिल रही है। ये मेक एंड ब्रेक राउंड है यहाँ पे मैट। अगर ये राउंड जीत जाती है तो एंस डबल डिजिट में पहुंच जाएगी और एस्ट्रालिस के लिए और बड़ा खतरा बढ़ जाएगा। जी हाँ, ऑफ आ गया यहाँ पे डिवाइस अलू दोनों के पास ही ऑफ। जो भी ये टीम राउंड हारी उसको इको करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, एंस अगर हारी तो फोर्स बाय पे जरूर जाएंगे क्योंकि फिर लास्ट राउंड होगा वो मैप का। और ये रन बूस्ट यहाँ पर बहुत ही घातक हो सकता था वहां पर X7 के लिए, लेकिन डिवाइस थोड़ी ज्यादा आगे चले गए। अपने उड़ने पे कंट्रोल नहीं था उन्हें। भले को तो ऐसा पंख लगाकर ऐसे उड़ने चले गए। बहुत एग्रेसिव यहाँ पर, जैसा कि हम लोग पहले भी देखा है यहाँ पर एरल और एलेक्सी भी काफी एग्रेसिव खेलते हैं टीम इंस। इस बार स्मोक नहीं किया उन्होंने, थोड़ा वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में स्मोक करेंगे। इस बार बी साइड काफी पीछे से अलू स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार बी साइड की तरफ कुछ भी नहीं है सिवाय थोड़ा बहुत मैप प्रेजेंस वहां पे मेरे ख्याल से सिर्फ जिपनिक्स का है। बाकी यहाँ पे मिड और आईवी स्प्लिट थोड़ा मोनोटोनस जैसा गेम प्ले अभी हम लोग नोटिस कर रहे हैं। अगर आपने कल के भी गेम्स देखे होंगे तो ये सेम पोजीशन पे सारे प्लेयर्स एक ही तरह से खेलते हैं। जैसे एरल वाली पोजीशन पे आप देखिए, अब यहाँ पे डुपरी एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं, स्मोक है, लेकिन ये कल भी इसी सेम पोजीशन पर दोनों के दोनों प्लेयर्स एलेक्सी बी और एरल काफी बार मिले, काफी बार। कल उन्होंने मुश्किलें लेकिन जरूर पैदा की थी वहां पर। आज कितना धीरे क्या अंदाजा है यहाँ पे एलेक्सी बी और एरियल, शायद फाइनली एरियल पोजीशन को देखते हुए बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं होगा, लेकिन मैजिस्ट वहां पर मारे गए और ये सबसे बड़ा नुकसान था वहां पर एस्ट्रलिस के लिए। मैजिस्ट का मरना, क्योंकि उनका ही वेट हो रहा था कि अगर मैजिस्ट एक फ्रैग निकाल सकते हैं तो इधर डिस्ट्रैक्शन होगा, और मैजिस्ट ने एक फ्रैग निकाला, उसके बाद मैजिस्ट का फ्रैग निकाला, सबके सब ऑफ गार्ड। कैसे डुपरी खुद के फ्लैश हो गए। बाकी सब देखिए लास्ट के 2 फ्रैग मैट कोई देख ही नहीं रहा था, कोई कहीं भी नहीं देख रहा था, नाइफ निकाल के खड़े हो गए थे। और डुपरी जो कि ऐसे उन्होंने शायद फ्लैश किया, मैट सेल्फ फ्लैश हो गए अपने फ्लैश में। अब प्योर इको तो नहीं बोलेंगे, अब जिपनिक्स के पास आर्मर है, मैजिस्ट के पास भी है, थोड़ी बहुत पिस्टल अपग्रेड है, लेकिन जैसा मैं बोला था मेक एंड ब्रेक राउंड, ये राउंड हो सकता है। ये राउंड ऐसा अभी हम मैं ऑफिशियली बोल सकता हूं कि हाँ कमबैक की स्ट्रीक शुरू हो चुकी है मैट। दो शॉट्स वहां पर राउंड में बहुत अच्छी एंट्री दिलाते हुए, और मुश्किलें हो सकती है यहाँ पर। मैजिस्ट डाउन तो जरूर हो चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छी 2 एंट्रीज, 2 एक ऑप है यहाँ एनसी के पास। ग्लेव रिट्रीवेबल नहीं अभी तक। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात यह है कि बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके पास 3 क्लॉक्स और 1 सीजी है। टॉप गार्ड पकड़ आ सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट एलेक्सी ने उनको बचा लिया, और एक मेरे ख्याल से डुपरी ने स्पॉट कर लिया गया उन्होंने जिस तरह से पिस्टल फेंकी। लेकिन C4 अभी भी बी की तरफ एक फ्रैग जरूर, एक और फ्रैग तो यहाँ पे राउंड हो सकता है। जिपनिक्स का लॉन्ग में अच्छा फ्रैग, 1v2 अभी भी जिपनिक्स द क्लच मास्टर, प्लान यहां जरूर मिलेगा। क्लच मास्टर, द क्लच गॉड, उनको स्पॉट कर लिया गया हो चुके हैं, लेकिन C4 की पोजीशन अभी तक स्पॉटेड नहीं थी, अब हो चुकी होगी क्योंकि वहां से दिखता है C4 बहुत इजीली फॉल करने पे मजबूर। यहाँ पे जिपेक्स सैंडविच पर आ चुके हैं, साथ में खेलना चाहेंगे यहाँ पे।
फ्रैग यहाँ पे, लेकिन अभी खुले पॉइंट हो चुका है। एक और फ्रैग, पोजीशन का भी अंदाजा नहीं, एक और फ्रैग ले सकेंगे नहीं। X7 यहाँ बेटर गेम प्ले दिखाते हुए, लेकिन टाइम के मामले में बहुत बुरी हालत। हो जाएगा मैट, हो जाएगा आराम से, बिल्कुल आराम से डिफ्यूज हो रहा है, लेकिन बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पे एंस को, जो मेरे ख्याल से मैजेस को एक्सपेक्ट भी नहीं किया। 2 फ्रैग वहां पे मैजेस ऑफ गार्ड पकड़ा पूरी तरीके से अलू को। एक छोटा सा आप समझ सकते हैं, एक छोटा सा विन ही था इस राउंड में एस्ट्रलिस के लिए। काफी ज्यादा डैमेज दिया, 4 प्लेयर्स 4 गन्स। अब मैजेस के ये शानदार 2 फ्रैग्स यहाँ पर, ऐसे डीगल शॉट्स। हर प्लेयर जो CSGO में खेलता है अंकित, सब ये आशा करते हैं कि ऐसे डीगल शॉट हमारे भी लगे। वन डिग्स बीच में फिर से स्मोक देता। तो आप जैसे मैं बात कह रहा था शुरुआत में, जब एस्ट्रेलिस सिटी खेली थी, स्मोक के आगे खेलना चाहिए अगर आपके पास गन्स है तो, लेकिन इसी बीच फ्लैग करके डिवाइस के काफी अच्छे फ्रैग शायद उन्होंने स्मोक के थ्रू मारा। डिवाइस के 2 फ्रैग्स यहाँ पर, और एक फ्रैग डुपरी ने लिया, एक फ्रैग डुपरी ने लिया, सॉरी। लेकिन X7 यहाँ पर डुपरी को जरूर डाउन किया है। अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी को, ऑलमोस्ट पे गार्ड पकड़ सकते थे। ग्लेव वहीं से आ रहे थे, आज के मैजेस वहां से आ रहे थे। ऐसा लग रहा है कि बी साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन C4 अभी भी घूम फिर के यही आ रहा है मिड की तरफ। मैजेस की पोजीशन काफी अच्छी। अलू अभी भी स्पॉट करने की कोशिश, एक भी प्लेयर स्पॉट हो, कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। एक प्लेयर जरूर स्पॉट हुआ है, X7 को अंदाजा है शायद एक गेम हो रहा है, लेकिन डिवाइस बेटर प्लेयर। अलू एक फ्रैग जरूर मिला उन्हें, लेकिन शॉट मिस करते हैं वहां पे, और सरगेई के पास ऊपर दारोमदार 1v3 निकालने का। अभी वेंस की इकोनॉमी अच्छी नहीं है और उनकी पोजीशन मार्क कर रहे हैं। एक फ्रैग जरूर लिया, लेकिन मैजिस वहां खड़े के खड़े रह गए और सरगेई को एक फ्रैग मिल गया। बॉम्ब प्लांट जरूर होगा। थोड़ी देर हो गई, थोड़ी देर। ऐसा मुझे लगा शायद हेडशॉट दिया जिपनिक्स को, क्लोज वहां पर 4 एचपी पर जिपनिक्स को सीधे हेडशॉट दिया निकल के मैट उन्होंने। शायद थोड़ा बहुत डैमेज जरूर था जिपनिक्स शुरू आने में, और अलू ने पे काफी शॉट मिस किए, शायद 2 या 3। अब ओवर टाइम के यहाँ पे चांस लगते हुए मैट 4 राउंड का डिफरेंस क्या कमबैक कर सकेगी एनसे? Astralis won 8 of the 9 matches they played to qualify for the grand final since some time. काफी अग्रेसिव जा रहे हैं, और घाट पकड़े सके खुद ही पकड़े जाएंगे। एक फ्रैग जरूर लेकर डिवाइस, एक फ्रैग मिला, एक और फ्रैग वहां पे डिवाइस फाइनली मारते हुए। जिपिक्स की पोजीशन शायद वहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्मोक पर एम कर रहे थे किसी भी तरीके से। अगर जिपिक्स निकलते हैं तो ये फ्लैश गलत होता हुआ वहां पर। भाई एरियल की शायद पोजीशन यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगी। ग्लिफ जा रहे हैं, क्या सर्गे को एक्सपेक्ट करेंगे वहां पे? यहाँ C4 है, सर्गे वहां पर C4 डाउन किया, पोजीशन भी मिल चुकी है और सर्गे भागने में भी कामयाब। जिपिक्स काफी देर तक पीछा किया उन्होंने। 3v2 X7 और ये दोनों लैडर रूम, गलती से अगर यहाँ पे जंप करते हैं तो काफी मुश्किल हो पाएगा। लेकिन जिपिक्स स्पॉट किया उन्होंने। प्लेयर यहाँ पे एसएल, क्या एरियल को अंदाजा है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं अंदाजा है यहाँ पर। एक फ्रैग, लेकिन अभी डिवाइस को ये नहीं पता कि वहां 2 प्लेयर्स थे एरियल, और ये गलत होता हुआ थोड़ा सा एस्ट्रलिस के लिए। जिपिक्स अकेले बचे हैं और उन्हें आइडिया नहीं है सर्गे की पोजीशन का। उन्हें ये जरूर पता है कि एक प्लेयर बी साइड पर जरूर था, लेकिन वो कहां है इसका कोई अंदाजा नहीं। अब सर्गे कितना स्मार्ट खेलते हैं, जिपिक्स को लग रहा है ये तो नहीं आ रहा। मैडी बहुत हाई मतलब हाई लेवल हाई आईक्यू का गेम प्ले होगा, क्या बोलूं? नहीं ए नहीं जा रहे, बी पर ही प्लांट करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा प्लांट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे सर्गे के पीछे होने का, जो कि काम आया उनके। और अब ये देखिए किस तरीके से C4 उनके कंट्रोल में है और दोनों प्लेयर्स को आगे आना पड़ेगा। किट भी नहीं है। ये राउंड बहुत ही डिफिकल्ट, लेकिन ऑयल ट्रेन पर स्पॉट करने की कोशिश जरूर करेंगे उन्हें। मैप यहीं खत्म हो सकता है। नहीं देखा वहां पर सर्गे ने, 2 बार पीक किया उन्होंने।
और ये इजी सा राउंड यहाँ पे Zipex कितना इजी दिखाते हुए इस राउंड को, और ये पहला मैप यहाँ जीत चुकी है एस्ट्रालिस। दूसरे मैप में हम जरूर आएंगे बहुत ही जल्दी, आप बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सुपर मैड और ENCE। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। My name is Michał Żygłocki. I'm a head of production and set designer for IEM. For this stage we have 15 tracks overall for entire show. For the 2 weeks we have more than 30 tracks, 160 people in peak working. We have 500 lighting fixtures only for this stage, from which 300 are moving lights. We have 1,000 LED screen tiles, which is around 200 square meters. Kilometers of cabling, obviously. We have also 1 kilometer of video strips that are incorporated into the stage. On the floor, so all these gaps we see on the stage, they're gonna be filled with LED screens. We're gonna have in total 3 huge LED screens. The biggest challenge here is lack of rigging possibilities, and obviously time is a problem because we have only 5 days from the ground to the finished working product, including programming of everything for the show. We would like to have more things that can fly from the ceiling, but there's very big limitations in terms of the ceiling capacity. We are also as a company involved in shows such as The Voice or Dancing with the Stars, and pretty much the tools are the same. The stage itself, its design, needs, and spectators and audience have a little bit different expectations, but from the technology point of view, it's pretty much the same. I remember, I believe it was 2014 when the Virtus Pro was playing in this arena, and I brought my wife to the show, and she was even involved, like how people were reacting and how she was personally emotional with what's going on. What I think is that you really have to understand this community of people to truly understand how to also do our job, because it's really different than the concerts. If you understand it, you can think from different perspectives of the same elements that are in both worlds. This year's stage is going to be a little bit higher. Next move is we would need to have the ceiling even higher. So it's like pretty much we are using all that we can. And of course, overall the event is growing. We have more stages. The amount of equipment and people involved on our end, it's bigger every year. When I see people enjoy, I'm happy that we did the right thing and that months of preparations were for something. Oh, for me exactly, it's rushing, because it's kind of it's my role basically. So rushing. Camping, I would say. As I said before, I'm a defensive player, and I mean, let your teammates rush and die first, and then you could clutch around.
Yeah, I would say rushing because I'm more of an aggressive player. So. Well, I think we try to mix it up, but camping, yeah, camping for sure. Both, yeah. A good mix of both. You always have to find the balance. Myself personally, I guess it would be rushing over camping. Just in general, my playstyle is very aggressive, so I like to get in there and cause a ruckus or something like that, so definitely rushing. Camping. Definitely camping. Always offline tournaments. I'm an old school guy, so I play a lot of 1.6, CS 1.6. So it's more fun because you can like share experience with another people and knowing people in other countries. So I prefer always offline. Offline tournaments for sure. Online you could have some problems with the ping or lag, stuff like that. You don't really get it on LAN, so yeah. Yeah, I also say offline. Everyone is playing on the same terms. Nobody have better internet or worse internet. Nobody has like better monitor or whatever. Everyone is playing on the same terms. Offline for sure. The only hard part is the traveling. Yeah, like offline more. It's more fun and more like exciting to play. Always offline. Always offline, yeah. Offline would definitely be the preference. It's all sorts of things. The main thing, I love to play on stage in front of, like for example, in the Spotted Arena, there's going to be thousands of people, and the feeling of that is going to be definitely amazing. Playing in the past in front of my home crowd in Sydney, in front of thousands, just an amazing feeling. So definitely offline, and I think offline also you all have. It's all a very similar level of advantage, where online people can have very low ping, some people can have high ping, so offline definitely. Yeah, definitely offline. Can't wait to play in Spodek. I think it's like a mix. It's both. Sometimes you feel like it's a hobby and sometimes you feel like work. It depends. Some days you're having a lot of fun with the team and just winning every practice game, and sometimes you're not having that much fun and losing some games, and then you see it as work some way, yeah. It's both. Like, obviously you want to play similar to when you were younger, and you just enjoyed playing so much that you wanted to play. But sometimes, as in everything, when you play a lot, you kind of get drained or so, and sometimes you have to force yourself to play. Both. Like, obviously we have like times where we practice with the team really hard, and it's kind of my job. But I like to play outside of my practice too. I like to play with friends. I like to play FPL all the time. I do like to play deathmatch. It's like kind of my hobby too. Yeah, if you play like 3 weeks straight pracs, it kind of gets boring because you're like too deep in the game. But whenever you play with friends or something again, you see it's still a hobby.
Welcome back to the Intel Extreme Masters Katowice Major Championship Finals. I'm Frankie Ward and I'm here with the incredible crowd in the Spodek Arena. And I found myself a pair of representatives for each of our final teams. We've got Astralis and of course ENCE. And the slightly awkward thing is, these guys are mates. Are you not arguing over who's going to win, Marlena? Sorry? Are you finding it difficult because your friends are supporting ENCE? No, not really. It's all in good sport. Is it in good sport though because you're Finnish? Do you not find it slightly annoying that your Finnish countrymen are supporting a Danish team? A bit, a bit. Well, they don't know enough about Counter-Strike. Oh my goodness, Samo, you did not do that. I think we're going to have to settle this using the audience. Okay then, in the Astralis corner, Marlena, I want you to lead a cheer for Astralis. Are you ready? Yeah. Let's go, guys. Astralis! 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 Okay, not bad, but ENCE, can you outdo them? EC4! 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 It's getting a little bit political here in the Spodek Arena, and I know it's going to be extra political on the desk as we talk about our second map on... Oh, let's see it. Astralis gave them hell on the first map, and we're here to talk about trade. Astralis on the right track for a trophy, that's for sure, as they conduct themselves with the utmost grace. My goodness. Joined by Sponge and Pimp now to talk about it. I'm your host, Machine. We've got a lot to talk about in a very short space of time, guys, because real resilience and real chances from ENCE against Astralis on their map pick. Yeah, look, Alex, you know I'm a realist in this situation. I know Astralis is the #1 undisputed team in the world, but I'm even cheering for ENCE right now because I want to see a fantastic game of Counter-Strike, and once they had that clutch, that 1v1 where Sergey was able to win, it felt like that was another one of those rounds, another one of those ENCE rounds where they just pull it back and they just fight, you know? It was fantastic to see. I mean, Zipnik's the highest rated player on the server, and not only did he finish that game, Jacob, but it felt like on numerous occasions he saved Astralis' skin. He's just so good at the game, Alex. Isn't he? It's simple as it is, right? The clutch scenario, everything he does is so calculated, and that's just Zipnik's for you right there. ENCE did everything they could in order to give themselves a chance, winning both pistol rounds, playing some decent Counter-Strike, but in the end, as you said, guys like Zipnik's Magic Spore as well, who's definitely an MVP candidate for the entire tournament, stepped up. And I think ENCE right now just have to face the fact that they're playing an Astralis in top shape. Yeah, I think when you look at this being, you know, one of the lower ranking maps for Astralis, and they're still able to do this against a team whose best map it is, really just attests to how good this team is. Now, I don't, you know, I'm not normally calling players out for bad plays or deaths and that kind of stuff, but Ariel had some very bad deaths on that CT side towards Popdog. There's two that really stick out there. You can see the way that they're approaching a lot of situations too. X7, after he gets a kill with an AWP, he's now jumping, hopping around, very aggressive. It looks like they're scrimming, right? They're just playing a very free style, but X7 had a huge amount of impact in that game. I mean, this quote-unquote puggy style, it's got them far. It seems that that confidence comes from this kind of, this isn't a big game attitude. You don't have to get into this super tight-knit, overly concentrated. What do you reckon? I think that's a good idea. I like the way that they're approaching the game as they would approach any other game coming into the final against Astralis. They're playing up front, they're playing aggressive, they're trying to force the rotation out of Astralis and trying to put pressure on them. And yeah, you could say that that may not work against Astralis, but at least they're trying and they're sticking to their own game plan. This could easily have been a much more of a slaughter had they tried to play a different style of Counter-Strike. Alex, I highlighted some of the clutch statistics for this ENCE Esports team over their whole journey here, and they're phenomenal, right? Everybody's had a lot of impact in 1vx situations, but Zipnik's showing up again, breaking hearts, getting it done. That's how he closed it out. He's really showing him how the best clutcher in the world does it. Yeah, my goodness, he just keeps bringing it. And of course, 3 clutches for ENCE on Train. Well, 1 versus X's, that's for sure. Now, we do have an opportunity to break some of Train down at greater depth over at the Telestrator. Sean Gares, what have you got for us? Yeah, Alex, so this is actually the clutch Xyp9x won to close out the game. And what's so cool about this is all of the different things Xyp9x does right. So we're going to start by playing it. He just mollied in the ladder room. He jump spotted someone there. Gets a free kill for Device right now. So that brings it down to a 2-on-2. Device gets traded out, and now we're in a 1-on-1. So Xyp9x knows, or I'm sorry, yes, a 1-on-2. I'm sorry, 1-on-2. So he knows Sergey got a frag previously at inner, so he knows he could be lurking around somewhere close. And he knows Sergey has a CZ, so he has to play a close angle. What you're going to see, he shakes his crosshair on the spools. That's a common land trick that actually a lot of top pros do. He's trying to get a reaction out of the crowd. So he immediately clears that spot without clearing it, which is the craziest thing of all. He plants in the only spot that's safe to everything, mollies the Z,
And then he's aware that Sergey could be upper. You could see he checked it, and then he gets in the best post-plant spot possible, the side of the oil train, and he just plays with sound from here on out. It's literally the perfect clutch. I don't think Sergey could have played the round any better. I was extremely impressed with how Sergey was disciplined enough to fall back after the first frag. It just didn't work out. Yeah, no, that's what's so mad to me is that Sergey managed to get the frag with the CZ. He only had a pistol and back away safely. These guys have got a whole lot of cojones, and we're going to be seeing how they fare on our next map. So the first train, it was ENCE's choice, did go the way of Astralis, but up next, it is the Danish territory, and the Great Danes, they haven't dropped it. 14-0 run on Inferno. The battle for Banana is the most highly contested piece of real estate in the game. Not only is it the main route for attacks on the B bomb site, but the information it provides the owner is immense. Round after round, countless utility is expended, carpeting the narrow choke point with flames, smoke, and shrapnel, all in the fight for control. Developing into what could be described as a tennis match of grenades, teams hedge their bets in the best way possible to deploy their forces to other corners of the map. The narrow streets of Inferno have played host to countless epics over the years. Keep your eyes peeled on a map that guarantees action-packed Counter-Strike. So the reason why Banana is such an important part of the map is because of the utility required to take it. And what we're going to watch right now is how Astralis dominates the Banana with utility and what it means for their late rounds. So we're going to have 3 people going to Banana at the start of the round, and you can see it forces MIBR to throw that smoke right there as a counter, so that way Astralis cannot get control of Banana. Glaive is jump spotting, and he's just double nading right now with Device and Xyp9x. And what's going to happen is as the smoke fades, they have a perfect timing for a re-smoke bottom Banana, the double mollies in the middle, which then requires another smoke out of MIBR. So now MIBR has used 2 smokes in Banana, and they have gotten no real estate for it. So it's now safe for Astralis to back up off of Banana, and I'll show you guys what this means now for the later round for Astralis, which is why it's so difficult to play him. So Dupree's going to get some info top mid and die right there, but Device is actually still alive at lane right there. And what he's doing is he's spotting mid, and then he smokes lane. So I'm going to pause it real quick. What that then causes MIBR to do is to go up the arch side of mid. Now, this seems like it's the right idea because you can see what's going on, but you also feel like Astralis is filtering you to that side of the map by throwing this smoke, which Device threw. So you don't really trust your instincts when you play Astralis, and that's why you're going to see actually MIBR go all the way back around, which, by the way, Fer got naded right there through the smoke by Magisboy. Another thing that you have to be worried about when you play them, and it's just their time in the round is running out, and there's nothing you can do about it. It's brutal, Sean. It really is, and we've seen it time after time. They've set records on this map for utility damage. They averaged at one point 50 average damage with utility per round. The current stat for Astralis on Inferno, out of 47 maps played in the last 12 months on LAN, they have the highest team out of everybody in the world with ADR of 38.8. That's the average over those 47 maps. They also have the highest win percentage, but one thing that's good for ENCE here is to actually have the highest opening kills out of all the same teams over the last 12 months on LAN. You know, they've got the highest 4v5 win percentage. You know, they're up there in trades as well, actually the highest at 25.1%. They're going to need all of those stat lines to come into favor here if they want to beat Astralis on their home pick. They have to play the best Counter-Strike that we've ever seen ENCE play. The problem for them is that Astralis have something to look at, right? We saw ENCE play Inferno against Liquid, a game that Liquid arguably should have won. They should have closed it out. ENCE had no business in winning that. That said, though, they were able to fight back and win that in OT. So the problem for ENCE coming into this one is their playbook deep enough to go up against a team like Astralis, who 100% have prepared Inferno coming into this grand final? I mean, there's plenty to look at, but how much is wrong? How much is you able to exploit? Twister, the coach, coming into this grand final, he said, I could find gaps in Liquid, I could find gaps in Na'Vi. You're going against Astralis on a map that they have not lost in what feels like forever. They've got a 14-0 streak. It is truly against all odds, and as the stage starts to rise, so does the anticipation, because now it is one single map of Counter-Strike. They've played thousands, but this one means oh so much more. Dynasty to be forged for Astralis and ENCE to complete the Cinderella story. The odds stacked against them. It's over to Henry G and Sadakis to shout about their favorite video game. और स्वागत है सबका यहाँ पे सेकंड मैप है ग्रैंड फाइनल्स के
इन्फर्नो यहाँ पे एस्ट्रालिस ने स्ट्रेट में माफ कीजिएगा एंस ने यहाँ पे स्ट्रेट में मिड पुश किया। X7 का अच्छा फ्रैग वहां पे। बिल्कुल, ये हमारे ग्रैंड फाइनल्स का सेकंड मैप है। पहला मैप एस्ट्रालिस ने बहुत ही कमेंडेबल तरीके से जीता था और इस मैप पर भी शुरुआत काफ़ी अच्छी दिख रही है अभी तक। एरल को एक फ्रैग जरूर मिला लेकिन अकेले बचे हैं। काफ़ी एग्रेसिव यहाँ जाने की कोशिश, लेकिन डुपरी 3 फ्रैग्स के साथ पहला राउंड अपने खाते में डालते हुए एस्ट्रालिस 1 ENCE 0। और ये वो मैप है जो डिसाइड कर सकता है कि एस्ट्रालिस मेजर्स के विनर्स होंगे या फिर हम लोग तीसरे मैप पे जाएंगे। और इस राउंड अगर आपने देखा होगा तो एंस ने सरप्राइज करने की कोशिश करी थी वहां पे कि मिड पुश करेंगे, सरप्राइज करेंगे एस्ट्रालिस, लेकिन एस्ट्रालिस ने एकदम शुरुआत में देख लिया था वहां पे। और फिर उसके बाद फ्रैग जरूर मिला अंकित उनको, X7 को एक फ्रैग जरूर मिला मिड पुश करके, लेकिन तुरंत काउंटर किया गया। डुपरी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पोजीशन होल्ड की है वहां पे टी स्लोप पे। और मिड टू से पुश आ गया था तब तक, क्योंकि पूरी तरीके से सैंडविच कर दिया। स्पैम जरूर पड़ रहा है। एक ऐसे साउंड 3 SMG 4 SMG में देख सकता हूँ। मात्र एक राइफल जो कि डिवाइस के पास है, एक बी की साइड की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे लगता है दोनों ने एक दूसरे यहाँ पे एस्ट्रालिस ने अच्छी तरह रीड कर लिया है। और मैचेस के पास अगर देखें तो थोड़ी सी अनयूजुअल गन यहाँ पर MP5 यूज कर रहे हैं। 1.6 फैंस और जो जनरली हमने इस पूरे टूर्नामेंट में किसी के हाथ में नहीं देखा है। राउंड प्योर इको यहाँ पे कुछ भी भाई नहीं। 2 USP और P2 के जो कि डिफॉल्ट पिस्टल्स होती हैं। यहाँ पे फार्मिंग सिमुलेटर चालू रहता है डुपरी का, साथ में मैचेस भी ज्वाइन करते हुए। इसी के साथ ही अच्छा राउंड यहाँ पे एस्ट्रालिस के लिए और पैसे बहुत कमाए होंगे। 4 फ्रैग SMGs को गए हैं। 2-0 यहाँ पर इनसे कैसा खेल दिखाती है। ये मैप एस्ट्रालिस का पिक है और एस्ट्रालिस इन्फर्नो पे काफ़ी अच्छा खेलती है। और सीटी साइड में तो बनाना कंट्रोल एस्ट्रालिस का काबिल तारीफ है ही अंकित। और टी साइड जैसे कि अभी आप उसमें ट्रेन में हम बात कर रहे थे 80% की, यहाँ तो 90% की बात होनी चाहिए कि टी साइड में इनके 11-4 12-3 ही यहाँ इनका एवरेज रहा है। बिल्कुल, ये मैप एस्ट्रालिस का ही है अभी, इतने परफेक्ट है। और ऐसे अगर बोला जाए तो एस्ट्रालिस के कौन से मैप है ऐसा जो एस्ट्रालिस का खराब है? मुझे नहीं लगता कोई भी मैप है जो एस्ट्रालिस का खराब है। हर मैप पे ही वो अपने आप को इतना क्लोज टू परफेक्ट बना चुके हैं जितना कोई भी टीम आने की कोशिश भी नहीं कर पा रही है। लोग समझते थे मिराज अच्छा मैप नहीं है एस्ट्रालिस का, लेकिन कुछ दिनों पहले हमने देख लिया। फ्लैश जरूर किया है, डबल पीक हो सकता है, एक और पिक मिलेगा। जी हाँ, ट्रेड गेम चालू होता हुआ, लेकिन ऐसा कि अभी बी साइड पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप डिवाइस? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जल्दी उनको बैकअप की जरूरत पड़ेगी। पर तरगे को एक फ्रैग यहाँ जरूर मिला है। 2v2 का सिचुएशन है। फ्लैश में किसी तरीके से डुपरी स्नीक इन कर पा रहे हैं यहाँ सीटी पर। क्या तुमने आइडिया डुपरी क्या जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि सिटी में जिस तरह स्प्रे कर रहे थे बहुत आइडिया जरूर होना चाहिए। पीछे डुपरी पूरी तरह से कर रहे हैं और आगे ऑफ गार्ड पकड़े जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आइडिया है वहां पर। सरगे की पोजीशन का शायद अब अंदाजा लगाया है। सरगे वेट कर रहे डुपरी के आने का, क्योंकि अभी तक कोई भी हलचल नहीं हुई बी पर। और डुपरी की पोजीशन घातक हो सकती है, लेकिन काफी लो एंटिसिपेट किया जिपिक्स को फॉल बैक करने की कोशिश, लेकिन रीलोड पे आ चुके थे जिपिक्स। एक फ्रैग वहां पर और 1v2 स्मोक भी है। प्लांट आराम से होगा। एरियल क्लच कर पाएंगे टीम के लिए। बिल्कुल राइट डुपरी की पोजीशन चेक नहीं किया उन्होंने। और कितना अच्छा खेले यहाँ पे राउंड। डुपरी ने ओवर कमिट नहीं किया, उनका काम ही था वहां पे सिर्फ पिक लेके इन्फॉर्मेशन लेना, क्योंकि धीरे धीरे वो हर एंगल को शोल्डर पिक दे रहे थे। फिर से एक अच्छा राउंड का भी एक क्लचेस बंद हो गए मैडिया एस्ट्रालिस। बिल्कुल 3-0 यहाँ पर। और एस्ट्रालिस धीरे धीरे दर्शकों में थोड़ा सा निराशा ही जगाते हैं एक तरह से कि भाई एस्ट्रालिस अगर खेल रही है तो सामने वाली टीम हारेगी ही। तो लोग अब एस्ट्रालिस से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हर गेम में। एस्ट्रालिस अब तो लोग स्कोर लाइन गेस कर रहे हैं कि सिंगल डिजिट हराएंगे कि डबल डिजिट हराएंगे। डबल डिजिट हराएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हराना तो है ही इनसे यहाँ, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही मजबूत टीम फाइनल्स तक। सेमी भाई किया, खाली पिस्टल यहाँ पे थोड़े बहुत अपडेट किया। X7 के पास वो भी नहीं है, X7 मारते हुए जैसे बोल रहा था। अनफॉर्चुनेट डेथ वहां पर X7 की डिवाइस स्मोक के थ्रू ही वहां पे रोटेट करते समय, लेकिन यहाँ पर सर गई एक शॉट जरूर
उन्होंने मारा डुप्री को सीधे उनके सर पर, और डुप्री अगले राउंड में वेट करेंगे रिस्पॉन होने का। स्मोक के थ्रू काफी स्पैम्स वहां पर, बच के रहना पड़ेगा यहाँ पे। कुछ साइड कुछ लिया नहीं है, ऑलरेडी लगभग 40 आ चुके हैं, और ये मेरे ख्याल से मोलोटॉव भी काफी डेंजरस हो सकता था। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया एलेक्स भी, लेकिन एक ही फ्रैग ले पाए। आज भी इस पोजीशन से कोई भी डीगल शॉट लेता है अंकित तो हैप्पी की याद आती है पुराने इन्फर्नो में। और मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज में इस बात से हूँ कि अभी तक रोटेशन नहीं आया था वहां पे जब तक वो मरे थे, लेकिन बहुत टाइम तक मिला था वहां पे। तो इमेजिन करो रोटेशन तक आ जाना चाहिए था। वही मुझे लगता है वो टाइम बाई करने के लिए ही स्मोक से इतना फायर कर रहे थे, और तब भी रोटेशन नहीं आया था मैट। उनके मरने के बाद वहां पे शायद आलू पहुंचे हैं, वो भी जस्ट पहुंचे हैं। मतलब कैसे मेरे को ये शायद प्ले समझ नहीं आया। शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एक प्लेयर आएगा यहाँ पे, फेक चल रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 4-0 से एस्ट्रलिस आगे, और सिचुएशन यहाँ थोड़ी सी खराब एंस की। ये अब एक बाई राउंड में देखते हैं किस तरीके से एंस इस राउंड के आउटकम को चेंज करने की कोशिश करेगी। पहला अच्छा यहाँ पे यूटिलिटी है, सब कुछ है यहाँ पे, काफी यूटिलिटीज हैं, 2 ऑग्स, एक M4A4, एक ऑप है और एक M4A1 अंकित। आलू इस मैप पे काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्या यहाँ एस्ट्रालिस के सामने अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बात यह है। यहाँ सर्गई को ऑप नहीं मिली, ऑग नहीं मिली, क्योंकि उनको यूटिलिटीज खरीदनी थी और उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। हाँ, नहीं तो वो भी जरूर ऑग ही प्रेफर करते हैं। फ्लैश पूरी तरीके से, बहुत जबरदस्त फ्लैश, यहाँ पर अच्छी एंट्री मिल चुकी है जेपेक्स ने। अच्छा शॉट ऑफ, लेकिन जलते हुए ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए वहां पर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फ्रैग जरूर मिला वहां एरल को। TV3 और ये ए साइड का पूरा कंट्रोल पूर्ण रूप तरीके से एंस को मिलता हुआ। ये यहाँ पे सकते हैं फिर से अपना वही प्रोफेशनल जो लड़का वो दिखाने वाले हैं, बैक स्टैप। इसकी पोजीशन देखिए मैट यहाँ पूरी तरीके से, मेरे ख्याल से अगर कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा X7 यहाँ पे जरूर अब एक फ्रैग, लेकिन फ्रैग, तीसरा फ्रैग भी मिल सकता था, थोड़ा सा मिस हुआ वहां पर। और अलू यहाँ सीधे फॉल बैक, ऑप सेव करने की इच्छा इनकी, कुछ भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पर बिल्कुल। लेकिन बस यही है कि अभी तक पहुंचने में बहुत मुश्किल है अभी सेव करना भी जिस तरीके से है। एक फ्रैग इनको ग्लेव को तो मारना ही पड़ेगा। मिस किया उन्होंने शॉट, लेग पड़ा। डिवाइस को भी नहीं मार पाया यहाँ पे, दोनों तरफ से यहाँ पे पिंचन हो सकते हैं। स्पैम पड़ता हुआ एक और किसी तरीके से सेव किया उन्होंने ऑफ। मैच को देखिए यहाँ पे दूसरा फ्रैग स्पेशली टीवी को मारते हुए, मैचेस को मारते हुए ग्लेव बैकअप थे, उनको इतनी पीछे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कोई, मिड से कोई आ भी नहीं रहा था। फिर से इस राउंड मुझे लग रहा है यूएमपी देख के शायद ये राउंड बाय करने वाले हैं। 5 राउंड बैक टू बैक एस्ट्रलिस के खाते में अंकित, एक भी राउंड अभी तक नहीं मिला एनसे को। बहुत अंदर से उनका मन कचोट रहा होगा कि एक राउंड लेना जरूरी। कल MIBR को फर्स्ट राउंड मिलने में 7 राउंड लग गए थे। बिल्कुल ऐसा होगा। इन्फर्नो, वही इन्फर्नो वाली बात आ जाती है अंकित। मिड पे ऑफगार्ड पकड़ी आ सकती है, लेकिन साउंड दे दिया बहुत ज्यादा नॉइज, और डुप्री और जिपिक्स अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत मुश्किल सिचुएशन, लेकिन यहाँ सर्गई की पोजीशन स्पॉटेड नहीं है। शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ही प्लेयर हो, बिल्कुल स्पॉटेड है 2 प्लेयर्स यहाँ पर। साउंड सुना है जिपिक्स ने, मुश्किल सिचुएशन, लेकिन जिपिक्स यहाँ पर बेहतर खिलाड़ी साबित हुए। अब तो कैसे किस तरीके से माइंड गेम में हराएंगे, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब तो एक साइंटिस्ट को रिसर्च करनी चाहिए कि जिपिक्स के दिमाग की। इस डिवाइस X7 पे अच्छा फ्रैग लेते हुए पुराना की तरफ, यहाँ पे अकेले रह गए, कुछ कर पाएंगे क्या? काफी क्लोज वो शॉट, एलेक्सी भी मारे जा सकते थे लेकिन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाए, मारे ही गए। और फिर से अलू अकेले बचे हैं, और अलू के पीछे 2 प्लेयर्स आ रहे हैं। इस पर काफी डिफिकल्ट है उनके लिए। और फिर से शॉट मिस, सही समय पर जंप, और ये फिर से BM अपने सा स्प्रे छोड़ते हैं वहां पे कि हमारी टेरिटरी है, इन्फर्नो हमारी टेरिटरी है। 6-0 अभी तक एंस को कोई सफलता नहीं मिली यहाँ पे। अग्रेसिव प्ले मेरे ख्याल से वो लोग जो भी चीज पोजीशन ली थी, डबल स्टैक जो लिया था वो काफी अनएक्सपेक्टेड हुआ।
कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा आपको। मैं कैसे विंडो के लिए लिया था कि अगर विंडो कोई आता है प्लेयर बॉयलर से एडी करता है या ऑपर कोई होगा तो उसके लिए लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है, कहीं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एंस के लिए साउंड दिया और 2 प्लेयर्स वहाँ पे डबल पिक किया। अगर वो एक मार भी लेते तो एक और प्लेयर ट्रेड करने के लिए फाइनली एक यहाँ टाइम आउट एनसे का, और सोच रहे हैं किस तरीके से एक राउंड तो निकालें और अपना खाता तो खोलें। अंकित, कमबैक की बात करें तो मुझे अभी तो मुश्किल ही लग रहा है। सिटी साइड जो कि एनसे की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर ही पसीने छूट चुके हैं एनसे के। बितर होती हुई इस राउंड फिर से बाय किया है, लूजिंग बोनस ऐसा आ चुका है कि अब बाय कर सकते हैं हर राउंड लगभग। अच्छा बाय है अगर देखा जाए तो, यूटिलिटीज भी काफ़ी हैं। और अबे शॉट किया, शॉट मिस फिर से यहाँ आलू। कमिट करना चाहते हैं लेकिन लास्ट 3 शॉट्स हमने जो नोटिस किया है आलू के तीनों मिस हुए हैं। आलू को ही यहाँ पे, आलू और X7 दो ऐसे प्लेयर हैं तो फॉर्म में वापस आना पड़ेगा। लास्ट मैप पे आलू थोड़े बिल्कुल, और आलू का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है अंकित। स्पॉट किया लेकिन जल के मरे वहां पर, बहुत रिस्की गेम प्ले था। X7 भी काफी लो हो चुके हैं और ये फिर से बी की एंट्री, यहाँ पर थोड़ी सी हल्की एंट्रियां मिल चुकी है, शायद स्पॉट किया है वहां पर X7 को। काफी ऑफ है यहाँ पे, लेकिन एक और फ्रैग अप X7 का यहाँ पे, जैसा मैं बोला था X7 और आलू को वापस आना पड़ेगा। X7 तो फिलहाल एक टास्क तो पूरा हो चुका है। जिपनेक्स अभी भी किसी भी हाल में, मैं तो बोलने नहीं वाला कि यहाँ पे राउंड जीतेंगे एंस। A0 2 वर्सेस 4। X7 काफी स्ट्रांगली बी को यहाँ होल्ड कर रहे हैं और ये, लेकिन यहाँ Zipex बी की एंट्री दिलाते हुए, बी पर कोई भी प्लेयर नहीं, रोटेशन अब हो रहा है। अलू आ चुके हैं ऑप लेकर, लेकिन डुप्री अभी भी यहाँ पर स्कोप का साउंड दिया है डुप्री को बॉम्ब प्लांट होता हुआ। बात पहले भी करा था, इस बार फिर से कोई रोटेशन नहीं आया उनके 3 किल लेने के बाद भी, और अभी यहाँ पे एडवांटेज चेरिस के पास बोलना चाहूंगा। सिर्फ एक फ्लैश आलू के पास है, कैसे उसको यूज करेंगे। 2 ब्लेसिटी से आ रहे हैं, डुप्री ऑलरेडी स्मोक से आगे आ चुके हैं। अच्छा क्रॉस फायर यहाँ पे, फ्लैश यूनिक अगेंस्ट जाता है और ये बहुत अच्छा क्लच यहाँ पर एस्ट्रलिस की टीम की, बहुत अच्छा क्लच। डुप्री को 2 फ्रैग्स मिले, Zipex को 2 फ्रैग्स, और बिल्कुल यहाँ पर सपने तोड़ते हुए अंकित, सपने तोड़ दिया इन्होंने। मतलब फिर से X7 यहाँ पे 3 किल लिए, उनके कोई बैकअप नहीं, कोई भी नहीं पता C4 ड्रॉप है, मैक्सिमम चांस अब भी आएंगे, कोई भी रोटेट ये शॉट देखा आपने जिस तरीके से उन्होंने स्प्रे ट्रांसफर किया, बिल्कुल। अब तो ऐसा मतलब कि हाथ को आया मुंह ना लगा वाला सिचुएशन था ये तो। अब तो रोज की बात हो गई यहाँ पे डुप्री के लिए। और टाइम में मुझे लगता है एस्ट्रलिस खुद बोर हो जाएगी यार, अब तो जीत के बोर हो रहा है। एक आधा हार लेते हैं एक आधा हार ही लेते हैं। और एलेक्सी भी यहाँ पर एक फ्रैग जरूर मिला उन्हें, डैमेज बहुत ज्यादा नहीं नेट से। सेकंड टाइम मैं लास्ट राउंड X7 का बैकअप नहीं मिला। पहली बार जब याद उन्होंने डीगल से फ्रैग्स निकाले थे तब भी नहीं मिला था उनको। अगर उस टाइम तो वो राउंड भी जीत सकते, तो ये राउंड तो पक्का रोटेशन एक प्लेयर आना चाहिए था। ट्रेड हो जाते प्लेयर्स बी पर, और ये सेम स्टैक हमने पहले भी देखा है एनसे का अगेंस्ट लिक्विड, और वहां पे एलिज ने स्पॉट किया था जंप, और वहां पे दोनों ही प्लेयर्स का एक साथ इन्फो मिला था उन्हें, और दोनों ही प्लेयर को मार दिया था उन्होंने। और वो सेम सिचुएशन यहाँ पे ऑलमोस्ट, बस इस बार आर्मर जरूर है C4। लेकिन मजे की बात यह है कि C4 मिड पर है, या थोड़ा मिड से ये थोड़ा इजी रहेगा। पास में बिल्कुल मिड टू मिड ड्रॉप काट के बगल में अकेले प्लेयर एरल हैं ए पर। अगर ए का गेम होता है तो बहुत मुश्किल होने वाला है ये डिवाइस। C4 कहीं भी कमिट नहीं कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं अभी कि शायद ही बी साइड हो। कुछ दिख नहीं रहा, कुछ दे भी नहीं रहा। एलेक्सी भी जल्दी जल के मर सकते हैं, डिवाइस अगर आ गया है। बिल्कुल समझदारी का खेल, वहां पर डिवाइस को स्पॉट जरूर किया है X7 ने, इन्फो मिल चुकी है, लेकिन ज्यादा कुछ डैमेज नहीं कर सके। यहां पर फिर से गलतियां होती हुई, डिवाइस को एक और फ्रैग नहीं मिलेगा, लेकिन एरल यहां पर बहुत मजबूत तरीके से
जमा रखे हैं अपने पांव। 8 सेकंड ऑन द बोर्ड, एक और फ्रैग चाहिए था लेकिन ए साइड क्लियर होती भी और बॉम्ब प्लांट इजी। 2v3 जरूर है लेकिन अभी भी डिफिकल्ट है ये राउंड एनसे के लिए। ये भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आप कैसे एस्ट्रलिस को हराएंगे। ये राउंड अपने सब कुछ सही जा रहा था, वहां पे मेरे ख्याल से एक फ्रैग और ले लेती स्विच। आलू गेम जरूर हो सकता है लेकिन मैचेस की पोजीशन देखिए काफी ऑफ एंगल, शायद ही आलू वहां पे उसको एक्सपेक्ट करें। और अब अलू के लिए चीजें गलत होती हुई, अलू को स्पॉट किया और ये फिर से एक और राउंड ज्यादा सही दिख रहा है। सगई हाथ में है उनके SG553, क्या वो डैमेज कर सकेंगे? नहीं, वो अभी भी पैलेस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन उधर 200 IQ देखिए जिपेक्स का, किधर किधर रोटेट किया उन्होंने। फायदा नहीं, ऑलरेडी बहुत पैसे हैं, 10 हजार लोगों के पास। अब कैसे रहेंगे? सब कुछ सही जा रहा था लेकिन उसमें आपने अपना पोजीशन देखी उसके पहले यहाँ पे हिरियल एक और फ्रैग माफ की जगह मैड अगर ले लेते तो मैं समझता हूँ राउंड बन सकता था एके से, लेकिन जिपिंग से स्ट्रेट वहां पिक किया वहां पे। लिटरली अंकित मैं मन से बता रहा हूँ, अभी अगर मैं इनके सामने होता तो मैं बो डाउन करता इनके सामने जाके। जिस दिमाग के साथ ये प्लेयर्स खेल रहे हैं, जिपिक्स का जो दिमाग है लिटरली अभी अगर दिमाग के मामले में इनसे ऊपर मुझे नहीं लगता है कोई भी है। साइंटिस्ट को रिसर्च करनी चाहिए इनके दिमाग के ऊपर। जिपिक्स एक अच्छा स्पेसिमेन बन सकते हैं, रिसर्च फैक्टर्स फॉर रिसर्च पर्पस। मैं इनके सामने तो अभी तक मैं ऐसा सफेद झंडा जो होता है लहरा देता। नुकसान सहना पड़ा एचपी का वहां पर। एक बी साइड की एंट्री मिल चुकी है, रोटेशन जरूर हो रहा है लेकिन स्मोक हो चुका है सीटी और आराम से यहां पर डिवाइस यहां से गए। फिर से शॉट्स मिस करते हुए अकेले बचे हैं फिर ए पर और ये पोजीशन इनकी पता है। यहाँ मैं सोच रहा हूँ एक आधा राउंड आ जाए क्योंकि मेजर फाइनल में आप नहीं चाहेंगे 16-0 हारे हैं आप। बिल्कुल, लेकिन एस्ट्रेलिस को आप जानते हैं, मतलब अगर यहाँ क्रिकेट के फैंस हैं हमारे दर्शक में तो मैं एस्ट्रेलिस को ऑस्ट्रेलिया ऑफ काउंटर स्ट्राइक बुलाता हूँ। नाम भी कितना सिमिलर है इनका अंकित। जैसे पहले फैनेटिक के साथ होता था, फिर फेज के साथ हुआ, एस्ट्रेलिस के साथ ऐसा टीम जिसको हराना ही, टीम टू बीट एंड बुलीज। तो ग्लेव को देखिए आराम से आके यहाँ पे कोई चांस नहीं। जैसे हर राउंड अब यही हालत हो रही है कि किसी कोने में जाकर छुपने की कोशिश कर रही है इसके लास्ट बचे हुए प्लेयर, उनको खोज के हंट किया जा रहा है। थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे अब एंस के लिए। यहाँ पर नेट देखिए, ये नेट बहुत ही घातक नेट, यहाँ पर बहुत डैमेज, बहुत ज्यादा डैमेज वहां पर दिया गया था। और ग्लेव का ये नेट, एक और टाइम आउट यहाँ पर एंस का। क्या डिस्कस कर रहे होंगे कि यहाँ से 9-6 बेटर हो सकता है लेकिन नेक्स्ट चैलेंज के सामने आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या कर सकते हैं अभी? क्योंकि अभी एग्रेशन ट्राई किया मिड पे, मिड 2 पे, बनाना पे, नहीं हुआ। पिक्स मिली लेकिन आप खेल नहीं पाते। पिक्स मिल जाता है लेकिन उसके बाद जो मिड राउंड होता है, मिड राउंड तो एस्ट्रेलिस एकदम टोटली आउट प्ले, नॉट इवन 1% की 1% चांस भी नहीं दिया एंस को। यहाँ डबल डिजिट पे आप ऐसा लग रहा है जिसे बाय मैं देख रहा हूँ पहले पिस्टल आर्मर। एंस को पॉज क्राउड सपोर्ट की जरूरत है। फिर से मिड पुश किया पिस्टल राउंड की तरह, बहुत एग्रेसिव यहाँ पर मिड पे 2 प्लेयर्स आ चुके हैं। सर्गी को एक फ्रैग यहाँ मिल सकता है, मिला जरूर लेकिन डिवाइस अभी भी खड़े हैं बहुत स्ट्रांगली। एक फ्रैग मिलेगा, डिवाइस को पिन करने की कोशिश लेकिन डिवाइस का एक और फ्रैग, एक और भी हमारा 3 फ्रैग्स यहाँ पर और डुपरी साथ में पार्टी पे आते हुए। X7 की पोजीशन का अंदाजा नहीं शायद किसी को भी। X7 नुकसान थोड़ा पहुंचा सकते थे लेकिन ग्लेव वहां पर खत्म करते हुए 10-0 कर रहा था। फिर से 2 पिक्स मिले, 5v3 था लेकिन फिर से सेम की सेम हालत। क्या मिड राउंड यहाँ पे एस्ट्रेलिस को बहुत मुश्किल है। डिवाइस के शॉट्स ऑन पॉइंट, ग्लेव के शॉट ऑन पॉइंट, जिपनेस के शॉट ऑन पॉइंट। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? हेलो गुस्से में दिखाई देते हो, बुरी तरह ना 10-0। इधर से एक राउंड आना चाहिए, मैं चाहता हूँ एक राउंड। अब
मेजर फाइनल में 16-0 भूल के हारना चाहिए क्योंकि फिर बिल्कुल, लेकिन अभी हमें 16-0 की बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपने तरफ से ही उनको हताश करें, अगर हमारा मैसेज किसी भी तरीके से एंस के तरफ जा रहा है, हमें एटलीस्ट हमें एंस को सपोर्ट करना चाहिए अंकित यहाँ पर। लेकिन इसी बीच एक 7 अच्छा फ्रैग लेते हुए 2 फ्रैग वहां पर ट्रेड जरूर किया, लेकिन ये नेट बहुत ही खतरनाक हो सकता है आधी एचपी पर। और ये फाइनली एक राउंड का आसार, लेकिन बचे कौन है अभी? जिपनिक्स, हमेशा जिपनिक्स, व्हाई ऑलवेज। एक बार एसपीएस के ऐसा मतलब कि एक पिटीशन फाइल करना चाहिए, जिपनिक्स पहले जाएंगे राउंड में। जिपनिक्स रात में नहीं बचने चाहिए। और एक जिपनिक्स क्या करते हैं आप? एलएक्सीबी को मोक से ही मारा उन्होंने। एक राउंड जैसे ही हमने सपोर्ट की बात की अंकित, एक राउंड यहाँ पर एंस ने अपने खाते में डाला। 10-1 पे वापस आते हो यहाँ पे 10-1, यहाँ पे 10-5 अभी भी कर सकते हैं। खुश होते हैं यहाँ पे। X7 राउंड अगर मैड आ गया तो फिर तो बहुत लंबी लीड हो जाएगी, बहुत बड़ी लंबी बढ़त हो जाएगी क्योंकि ये तुरंत रीसेट होंगे अभी। तुरंत रीसेट होंगे और ये बहुत आगे आ चुके हैं। शॉट फाइनली कनेक्ट होता, लेकिन शॉट जरूर कनेक्ट हुआ वहां पर। एक और फ्रैग। ये नथिंग टू लूज वाली स्ट्रेटजी से खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे अंकित, क्योंकि जितना एग्रेसिव इनका गेम प्ले है यहाँ पर। डिवाइस फिर से स्मोक के थ्रू जो चल रहा है अभी, अब कुछ सही नहीं जा रहा है राउंड में। प्लेयर्स ज्यादा ही शॉट्स लग रहे हैं। चलिए स्पॉट भी नहीं कर पा रहे हैं, स्पॉट होने के पहले ही काफी सारे शॉट्स वहां पर मिस। एरल 44 एचपी पर जिंदा रहना ऑलमोस्ट लगाना ही नहीं चाहिए था मुझे, नामुमकिन। और ये नेड यहाँ पर खत्म करता हुआ एलएक्सीबी को आते हुए अपनी मौत का नजारा देखा उन्होंने। तो उनको खुद भी हंसी आ रही है कि टोटल आउट प्ले, मतलब इस मैप में ऐसा दिखाई नहीं दे किसी भी एंगल से। तो एमआईबीआर किसी भी एंगल से दिखाई दे रहे थे कि हाँ ठीक है प्रेजेंट है यहाँ पे वो, लेकिन यहाँ पे अंकल यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो जैसे कि एस्ट्रलिस जानती है कि इस समय पर एनसे की टीम कहाँ खड़ी होगी, ये उस तरीके से खेल रही है। लिटरली सही नेड्स, सही फ्लैशेस, सही शॉट्स थ्रू स्मोक्स। बिल्कुल, मतलब एंस यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो चुकी होगी अभी कि हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जो हम कुछ नहीं कर पा रहे। इसको आराम से सही मदद कर सकेगा, अच्छा फ्रैग निकालेंगे स्पॉट के उनका पे। और दूसरा हो ये मर गया वहां पे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा वहां पर एरल के लिए। सगे काफी एग्रेसिव, लेकिन डुपरी एक और फ्रैग और एक और राउंड यहाँ पर एंस के हार को नजदीक लाते हुए। एस्ट्रलिस ऐसा ही समझ रहे होंगे। सरेंडर एक ऑप्शन होना चाहिए, F1 प्रेस F1 टू सरेंडर। क्योंकि यहाँ पे टैक्टिकल टाइम आउट ले रहा है क्या शायद से? नहीं, एक और टैक्टिकल टाइम आउट बचा है अभी एंस के पास। फिर से बिल्कुल ये नेड बहुत गलत नेड। यहाँ पर डिवाइस के 4 फ्रैग्स, प्रे कंट्रोल ग्लेव में उनका हेस। 13-1 यहाँ पे। अभी अब क्या, अभी एक राउंड बस बाकी रह गया। अगर मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट फाइनल एंड्स हम लोग देख सकते हैं क्या अंकित? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मात्र 1.5 घंटे के अंदर फाइनल्स हो जाना। बिल्कुल, जिस तरीके से एस्ट्रलिस अभी खेल रही है, 13-1 का स्कोर है एनसे के लिए। चीजें बहुत ही खराब होती हुई, दर्दनाक तरीके से, दर्दनाक। क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या करेंगे अभी? 13-1 अंकित, अगर आपको याद है जो हमने एक बार टाइलू के अगेंस्ट खेला था किसी क्वालिफायर्स में। Exactly. मुझे वो उसका ग्लिम्स याद आता है। असहाय। बिल्कुल, मतलब करना चाह रहा था, कुछ सही भी हो रहा है। शुरुआत के 5 राउंड हम लोग जीते थे किसी तरीके से वो, और उसके बाद हमें कुछ समझ ही नहीं आया था कि हमारे साथ हुआ क्या था।
पे पूरा पैसिव खेल रहे हैं, हर राउंड कुछ ना कुछ एग्रेशन देखने जरूर मिलता था। रेस को पता है कि इतनी जरूरत उनकी जो एवरेज है इस मैप पे 11-4, 12-3, 13-2 हो रहा है। एक और राउंड है लगता है शायद 10-1 पे आप एक आधा कमबैक और करेंगे, लेकिन 13-2। एंस क्या है आपके पास अभी और दिखाने के लिए इस मैप पे टी साइड पे? ये फिर से स्मोक के थ्रू यहाँ इलेक्ट्रिसिटी काफी लो हो चुके हैं, 44 HP पर स्मोक के थ्रू स्पैम करने की कोशिश, लेकिन डर है कि उस स्पैम के बीच में कहीं खुद ना मर जाएं, क्योंकि इतनी देर से ऐसे ही मर रहे हैं। और ये फ्लैशेस X7 को एक फ्रैग मिला, एक्सीबी की अच्छी पोजीशन, लेकिन ग्लेव यहाँ पर ज्यादा बेहतर खिलाड़ी, 2 फ्रैग्स मिल चुके हैं और ये फिर से बी साइड की एंट्री और मुश्किलें बढ़ती हुई एंस के लिए। एक और राउंड जीतने के लिए जिपेक्स अलू को मारा उन्होंने, 14-1 का स्कोर मुझे दिखता जा रहा है। और अभी भी ओवर कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं, इतना डिसिप्लिन वैसे खेलना इन फ्यूचर। अंकित 14-1 नाइस फ्यूचर ब्रो। यहाँ पे आप क्या मोटिवेशन देंगे एंस को बिल्कुल, एंस के कोच भी बोल रहे होंगे कोई बात नहीं फाइनल्स तक पहुंच गए, कोई बात नहीं फाइनल्स तक पहुंच गए। जाएंगे हाफ टाइम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और स्वागत है सबका यहाँ पे दूसरे मैप के दूसरे हाफ में 14-1 स्कोर यहाँ पे एस्ट्रालिस के लिए, जो कि सबने एक्सपेक्ट करा था। मतलब एस्ट्रालिस से आप दूसरा को स्कोर लाना तो शायद अनएक्सपेक्टेड रहता, 10-5, 9-6,
इसी बीच एंस यहाँ पर टी साइड में आती हुई क्या कुछ दिखाने के लिए उनके पास, क्या कमबैक कर सकते हैं, क्या एक लेजेंडरी कमबैक हो गए, या फिर ऐसा लगता है मुझे कि ये फिर से 16 एक विक्ट्री होगी, वन साइडेड विक्ट्री होगी यहाँ पे। एक फ्रैग लेते हुए सर्गे ने फ्रैग जरूर लिया, डुप्री एक और फ्रैग लेते हुए और ग्लेव फाइनली रिटर्न करते हुए इस साइड खाली लगती है, लेकिन C4 देखिए सामने खुले में ड्रॉप है। और फ्रैग अभी भी यहाँ पे सिफनिक्स लड़ते हुए, मुश्किलें यहाँ भी बढ़ती हुई एनसे के लिए। बॉम्ब प्लान जरूर मिला है, लेकिन अभी भी जिपेक्स और डिवाइस दोनों जिंदा है। जिपेक्स जिंदा है, डिवाइस को आप भूल जाइए, तो जिंदा है, ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। डैमेज काफी दिया है उन्होंने, एक फ्रैग यहाँ जरूर मिला डिवाइस को, उनको पोजीशन है मिल चुकी है, दोनों पोजीशन रिवील्स, और फाइनली एक और राउंड यहाँ इनसे अपने खाते में डाले। और सिर्फ ये आशा, ये इस चीज की खुशी कि पिस्टल राउंड तो जीता हमने। Come on, it can be 14-5, it can be 14-14 मैच। बिल्कुल 14-14, और ये कमबैक, क्या हम ये कमबैक देख सकते हैं अंकित? अगर एस्ट्रालिस के अगेंस्ट इस समय कमबैक, हैंड्स डाउन, हैट्स ऑफ, कुछ भी कर लो यहाँ पे, मतलब चाहे वो टॉप नंबर 1 टीम क्यों हो ना हो, मेजर के सुनहरे बच्चों में, सुनहरे जो पेपर्स में इनका नाम दिखा रहेगा एंस का। बिल्कुल, और दूसरी बात ये हो जाती है द कमबैक दे वांट बट दे डोंट डिजर्व। अभी वो वाली सिचुएशन है एस्ट्रलिस के अगेंस्ट। और ये देखिए X7 यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव जाते हुए अपने कॉर्नर्स चेक नहीं कर रहे हैं। डुप्री को बहुत आसान सा फ्रैग मिला, डिवाइस अलू को भी मारा उन्होंने, और ये राउंड कहां से कहां पहुंच गया है। 2v2 अभी भी थोड़ी आशा है, बिल्कुल बिल्कुल आशा है, लेकिन जिपेक्स यहाँ पर अभी भी क्लच सिचुएशन में रीलोड पे आए, और सरगे यहाँ पर राउंड क्लच करते हुए एक और राउंड 3 योलो यहाँ पे मैच अगर देखा होगा तो 3-14, बिल्कुल मतलब नथिंग टू लूज, जितने राउंड जीत सकते हो, मस्त खेलो, मजे में खेलो। यहां तक भी बड़ी से बड़ी टीम नहीं पहुंच पाई है, हमने इस टूर्नामेंट में बड़ी से बड़ी टीम को हराकर यहां पर अपनी जगह बनाई है, तो हम खराब तो नहीं है किसी से। और हमारी जगह कोई भी टीम होती है एस्ट्रलिस के अगेंस्ट में, तो उनकी भी शायद यही हालत होती है, यही सोच रहे होंगे। हो चुकी है, टॉप की सेकंड टीम, थर्ड टीम, फोर्थ टीम सब मिल चुके हैं एस्ट्रलिस के राउंड में। MIBR, क्या बुरी हालत वहां MIBR की भी, NIP की हालत भी हमने देखी थी, जहां पर 16-0 नहीं हुआ था और फॉरेस्ट फूले नहीं समाये थे। ए यहाँ छोड़ दिया था एस्ट्रलिस ने, बिल्कुल एक फ्रैग मिला ए पर, अब बिल्कुल आराम से बॉम्ब प्लांट यहाँ मिलेगा। एक और राउंड जाता हुआ यहाँ पर, काफी एग्रेसिव गेम प्ले। ग्लेव एक भी गलती गुंजाइश नहीं है, एक गलती यहाँ पे और मैप पॉइंट एस्ट्रलिस के हाथ में। 2 गलतियां, मैप पॉइंट की बात कर रहा था मैं। हाँ मैप पॉइंट, ठीक, बिल्कुल सही बोला। डिवाइस यहाँ पे एक फ्रैग जरूर मिला अल्लू को रोटेट होते हुए, और अब जंप पिक देखिए आराम से पोजीशन का पता लगाते हुए। यूएसपी है, जितनी गन डाउन करेंगे उतना फायदा होगा। एलेक्सी भी यहाँ पर, उनके पसीने में पानी नहीं खून आ रहा होगा, जिस तरीके से भी उनकी हालत है। 1 HP पर जिंदा है, डिवाइस ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सके। 4 राउंड यहाँ पर जीत चुके हैं। इज्जत हर राउंड पे एक अलग सी खुशी चेहरे पर दिख रही है उनकी, कि जितने राउंड जीतना है जीतते हैं। ये मेन राउंड है, दिस इज द मेन राउंड। ये राउंड डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ क्या कमबैक हो पाएगा कि नहीं। ये गन राउंड है, चलिए अच्छी तरह इक्विप रहेंगे। मतलब क्या हम आशा रखें भी कि कमबैक हो सकता है या नहीं? इतना बड़ा कमबैक मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी मेजर्स में हुआ है अंकित। लेकिन एक टीम जिसने कमबैक किंग्स को बोला जाता है वो एंस, क्या कर पाएंगे यहाँ पे? 14-1 एक फ्रैग यहाँ पे मिलता है, एक और फ्रैग नहीं मिल पाएगा। ग्लेव सीधे उम्मीदों पानी, स्मोक, फ्लैश, नेड सब कुछ फेंकते हुए। ये नेड अलू को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, सही समय पर अलू नेड से दूर जाते हुए सिर्फ 1 HP का नुकसान। एरल X7 मिड पर अच्छी पोजीशन, इन प्लेयर्स भी की तरफ, और डिवाइस यहाँ पर हीरो बन के आए और अलू को खत्म किया उन्होंने। पोजीशन देखिए, बिल्कुल अब ये राउंड है। ओ उम्मीद जो बोल रहे थे, अभी सफेद झंडा फहरा दिया गया यहाँ पे एंस की तरफ से। हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि एंस कमबैक करेगी,
क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अंकित 15-4 एस्ट्रलिस जीत की कगार पर। खुद में एक स्टेटमेंट देते हो यहाँ पे एस्ट्रालिस। बैक टू बैक मेजर विनर्स अंकित। बैक टू बैक मेजर विनर्स। यहाँ पे लास्ट टाइम मेरे ख्याल से पिछले 3 सालों में जितने मेजर्स हुए एस्ट्रालिस, उनमें से मेरे ख्याल से 5 मेजर जीती है। 5 माफ की जगह 3 मेजर जीती है। बात क्या होगा? तीसरा मेजर हो गया है, मतलब आगे बढ़ गए। तीसरा मेजर होगा, थर्ड मेजर होगा, जीतेंगे। अगर जीत गए तो 3 सालों में 3 मेजर। 15-4 का स्कोर यहाँ पर। फनाटिक और एसके को ज्वाइन करेंगे। 7 क्या जा रहे हैं, लेकिन फिर से पूरा का पूरा बी सिचुएशन यहाँ देखिए आप, मतलब यहाँ पे एक इतनी डिसिप्लिन टीम है यहाँ पर। मेजर से कुछ फ्रैग्स दूर, 2 फ्रैग्स दूर यहाँ मेजर से, और ये मेजर विनर्स हमारे एस्ट्रलिस यहाँ जीत लिया है उन्होंने ये मेजर्स एनसे के अगेंस्ट। एनसे बहुत ही अच्छी टीम, लेकिन यहाँ पर एस्ट्रलिस के सामने खड़े रहना मुश्किल। बिल्कुल तो नाबूद कर दी वहां पर एनसे को एस्ट्रलिस ने। बहुत बहुत बधाई हो एस्ट्रलिस आपको ये मेजर जीतने के लिए। कोई चांस नहीं था मैडम, कोई भी चांस नहीं। बिल्कुल वेल डिजर्व विन फॉर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। और इसी के साथ मैं सुपरमैड, मेरे साथ है एलियन, हम लेते हैं आपसे विदा। अगली बार फिर मिलेंगे अगर आपने बुलाया तो। टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय एंड हैव फन। Astralis, they join an elite club, back-to-back majors, 3 in the cabinet. They don't lose a single map on the Spodek stage. Untouchable, undisputed. Astralis, your kings of Counter-Strike. Katowice, they've bared witness to the coronation. We here at the desk do too. Gentlemen, this is a run. This is a team everybody is setting their sights on. You stay on top long enough, you find the heroes becoming the villain, and my goodness, all have Astralis in their crosshair. Look, the Astralis brand is winning. It's as simple as that. These guys have done it time and time again. They're proving yet again that they stay the best team in the world, that nobody can touch. The gap that they have set, the precedent that Astralis have put down for the rest of the Counter-Strike scene is immense, and I don't know if anybody can climb it. No, they're the best team in Counter-Strike history, in my opinion. This is the most competitive era of Counter-Strike we've ever had. Dozens of teams paid to be pro full-time. Analysts, coaches, sports psychologists, it doesn't matter. None of these teams can match Astralis. 12-0 in the playoffs in the last 2 majors. Alex, every other team in the world goes to bed at night, and this is what they see. Astralis are their nightmare. Well, I'm scared. It was Muhammad Ali who said, if you even dream of beating me, you better wake up and apologize. And I don't think Astralis are far from it. People are going to start having those dreams, and my goodness, I don't think we're going to see them realize who on earth takes a trophy away from them. Well, OJ, he's going to be talking to the victors now. Thank you very much, Alex. It's an emotional stage right now, and with Dupree, who I can see has got tears in his eyes. Emotionally for you right now, you must be going through absolutely everything. Yeah, it's very unreal. I came into this tournament with my father. Yeah, he passed away just before I got here, and his last wish was that I went here, and so I really want to dedicate this win to my father. Mate, come on.
it is a fitting stage here, what you have just achieved. Back-to-back champions, you and Astralis. How much did you want to do that? For all the reasons, for the team, for your father, for your family, how much did you want to win this back-to-back major? I don't know, I mean, this was probably my biggest wish I've ever had. To make my father proud, my family, but also all of our fans and everyone in esports. Man, it's just unreal that we go and do this. This has been a dream and a goal for quite a long time, and now that we're back-to-back champions, it's just unreal. Thank you so much. How long can you stay at the level you're at? Because you are untouchable. I mean, the work ethic in Astralis and the way we function as a team, as persons, but also as players, the way our team back home supports us, the way like our physiotherapists and all that stuff helps us, and our nutritionists and everything, it just works well. So I want to give a huge shout out to our health team back home as well, and obviously to Kasper Witt, who is our sports director. So and obviously to all the lovely fans here that's supporting everyone, and the fact that we gave us such a great game was amazing. Thank you. What's left to achieve? I mean, we always want to win. That's always the goal. That's what we want to do, and we did it one more time here, and it's just amazing. So we're just going to keep grinding. We're not going to give up. Listen, I appreciate you taking the time. I think no one begrudged you especially, but Astralis as well. Back-to-back major champions one more time. Everyone in the Spodek. It is dupreeh and Astralis! Incredible. dupreeh, one of the many players who has set his life goals into the world of Counter-Strike, and you can see it coming into fruition. So much sacrificed in pursuit of glory, and glory they get once again. Astralis, they just look so comfortable under what should be the greatest pressure of their lives, of their careers. For some reason, there isn't an ounce of it. Smiles as they dismantle a team that has taken this world number 2, the world number 3. ENCE pushed all of those teams aside, and yet Astralis, they still look down and laugh. I don't know who can challenge them anymore. This is just a... Look, for some people it's a problem. For others, it's basking in the greatness, the glory of beautiful Counter-Strike, the fact that they can produce this time and time again. Na'Vi and Liquid were the two teams coming into this tournament who could be a threat. They were the two teams who we could take the fight. And ENCE, the underdog, ENCE, the team from nowhere, are the ones who rock up in the grand final. You can't say anything against them. They did what they needed. But Astralis, they just stand tall. They've come close to breaking and setting records all over the shop, whether it's a map spree on Nuke, Inferno, whether it's trying to get 2 16-0s. Yes, that's a record that they're aiming for at this point in time. It's just ridiculous. Yeah, it's crazy. I mean, they're on pace to bring Inferno up to their Nuke streak at this point, and I mean, there's just no weaknesses when you look at these guys. They've put so much work into this game. They've defined this meta of Counter-Strike. They've shaped how every team approaches this game due to their hard work and just finding different ways to play. ENCE, of course, moment to talk about our runners-up in this grand final here on Championship Sunday. They get their medal, and my goodness, that medal better be pride of placement, because of what they have achieved is not going to lose value by being unable to topple the infallible. The expectations that they've exceeded to get to this point, the Counter-Strike that they played, ENCE have to be proud of their effort. You know, they're going to be disappointed in the moment, but they know that they've just brought Finnish Counter-Strike back towards the top, somewhere it hasn't been for years. Big Clan, G2, Avangar, Liquid, Na'Vi, and they dropped 2 maps in all of those series. ENCE, their run not to be snubbed in any way, in any stretch of the imagination, and of course they'll all get their personal medals as well. Something to take home. You can't all share the trophy, can't chop that one up. The IEM trophy, absolutely a prestigious award for what was an incredible performance from Astralis. Look, Astralis only had 4 games go to double digits. They only lost 1 map, and that was to Renegades and Mirage in overtime. Nobody was close. Nobody was even, you know, sniffing them out. It's actually incredible. It's incredible.
the fact that they've done it 2 majors in a row, only dropping 1 map along the way. I mean, like you said, no one ever looked like they were going to contest Astralis in this playoff bracket. And you can't take anything away from ENCE's run. They beat some incredible teams, like you said, Alex, to get here. Yeah, but this was a different kettle of fish. This is a different beast. The Great Danes, the triple-headed Danes, the Cerberus to the gates of Counter-Strike championships. It's just, you can't touch them. You can't access that level of success when Astralis still exist in this game. Dominance, and it keeps getting better. Their Counter-Strike, it's not like it's falling off. It's not like people are catching up. If anything, the gaps in the games, they're getting easier. Astralis, they start their 2019 with a huge result. 2019, Astralis are your champions, and they will be setting their sights on the rest of the year to do exactly the same. We've got to reflect upon this, not only their run, but of course this major as a whole. And a storyline that I'm sure will be attached to Katowice for a while now. We've had the fair share of teams come through. Fnatic forged somewhat of a dynasty in this very arena. Astralis have done the same. And ENCE, you're definitely going to be on the tip of those tongues. Audience came from around the world. We have had Australian. Personally, I've met people who've traveled from Australia, China, you name it, around the world. Every part of Europe, all gathering in the city of Katowice to celebrate Counter-Strike, to watch what Astralis can do, to see ENCE. And every single one of those ENCE jerseys sold out. Yeah, I think when we look at this run from ENCE, and we talk about, you know, if you haven't heard it, you haven't been listening to any of the desk segments, this has been the best format possible at a major. Wow. There's been the format with the best of 3s as the gatekeeper. You're not getting through with any gimmicky wins this time round. And ENCE proved that they're not to be laughed at, they're not to be sneered at. They're a contender, and I hope that they can continue that kind of form as this year progresses, because we do need more names towards the top. Yeah. We've seen hot favorites dismantled, even before the Legend stage. Names like Fnatic, NRG, who went completely seamlessly through the minor and yet couldn't get to the top 8. I mean, this conversation is intriguing. Renegade finding form. And what's more exciting, MIBR. There are teams now who have just formed in their fledgling stages, Sean, that could start setting their sights on I mean, the craziest thing is when you look at the depth of the scene, a team like Mousesports couldn't even make it to the challenger stage of this major. Like, that shows how deep the scene is, that 5 all-star players can't even make it to the top 24 teams. Yeah. There's so many teams that can play this game well. If Astralis wasn't in this scene, without a doubt, people would think this is the most competitive area of Counter-Strike. Just because Astralis is so good, people think that it's not. Look at the semifinals. We had 2 teams, Na'Vi and MIBR, who put on some incredible shows. We got to see just a little glimmer. Na'Vi, for one thing, proved the whispers wrong. Don't forget, 3 weeks ago, Chad and Sean, we shared this desk and we were like, okay, so we're believing Zeus. This is the last major for Na'Vi. They came out and put on a show, as did Simple. There is definitely recipe for some competition for Astralis coming into 2019. There's fight, right? And these players and teams are going to continue to get humbled by Astralis until eventually either the right roster clicks, that people get on the right page, they change the way they practice. Look, there's only so many hours in a day, and we've heard this time and time again from Astralis. They don't practice any more than anybody else. They're just more efficient with their time. And whatever that formula is, whatever that recipe is, I hope Zonic holds that close to his chest forever, because I love seeing a run of a team being this dominant, because I get to live and witness firsthand the greatest Counter-Strike team ever. A game and its core that has existed for nearly 20 years has been refined. It took that long to see Counter-Strike at this level. Appreciate that for what it is. Yes, sure, ENCE, who did put on a fantastic show, could not topple or even make a dent, certainly in the second map. But Train, I mean, we saw glimmers. We know that this is going to be another team to watch out for on Astralis' road to glory. Yeah, I mean, ENCE has proven they have a very deep map pool. They can take Astralis to the limits on Train. Sure, they require both pistols and a little bit of luck here and there. You know, Zip Nicks. But they've shown that they can compete with the top teams in the world. We originally thought of them as a top 15 team. I think we have to consider them a top 5 team in the world after this major run. We might have to change our tiers of teams. You know, we have tier 1, tier 2, tier 3. There's Astralis, and then everybody else. Yeah, okay, that's fine. That makes more sense. It really is just one man or one team versus the rest, and we're going to be continuing to see this unfold, of course, as the year does. But when we do kind of look back and you look at how Astralis' dominance started, it was
touch and go. You know, leadership changes. They bring in a leader that has proven his worth. Glaive joins this roster, and then they go to new heights. They found Magis crying in the lobby in his North jersey, removed from a team. He now joins what is set to be the most historically dominant team in Counter-Strike history. This is a story in itself, and I'm not bored of it yet. Look, yeah, me either. I think that a lot of people, you know, think it's boring because the grand final is over and done with. It's a quick, it's a, you know, a flash in the pan. But the thing is, if a team can do this consistently, Alex, someone has to stand up and stop them. Yeah. They're not going to let anybody win. Maybe one man who's going to be interested in playing a part in that stopping during this year is Alexi B. What a story it's been for him. He was one of my favorites on the stage, confidence from every pore, and now Alexi B is standing by to reflect upon his major run. Alexi, from the European qualifiers back in December and 38 maps later, you are the second place in the majors. You must be feeling pretty good about that achievement. Yeah, of course it sucks after the loss, since we could have won it all, you mean. But it has been an exhausting journey this far, and we're very proud that we are at least second. And what happened on that stage today? We had our moments on train, a few tough rounds we could have won, which that the map could have been closer, or we could have edged it, but they took it from the T side over, and then we played Inferno, and of course they just showed that they are the #1 team in the world. Well, let's talk about you, Alexa. Just 21 years old and clearly one of the most promising IGLs in the game. How has this experience changed you? Of course, this experience boosted my motivation a lot, and like trusting myself, trusting my calls, trusting my team, because we can do it against the #2 and #3 teams in the world, so feels good. And you have captured the hearts and minds of thousands of fans around the globe. Is there anything you would like to say to them one last time? I want to thank everyone who cheered for us here. It was an amazing experience. And it's been an amazing experience getting to know you, Alexis, so congratulations, and let's head back to the desk. Yes, indeed, an incredible journey, and you can see that Alexi B, we've been talking about his absence of emotions, even he is not impervious to a grand final in Counter-Strike at this very moment. We do have an opportunity now to take a look at some of the Counter-Strike we witnessed, so why don't we go ahead, kick back, relax, and check out the Mountain Dew AMP Game Fuel Power Play. Now, we have talked, we have seen Astralis are the best team in the world. Now, I'm going to showcase a little bit of why it is Astralis is so good. The score is currently 6-0 in favor of Astralis. We're on Inferno. This is about to be the last chance for ENCE to do anything or get inside this game. If we play out the clip, we can see that ENCE is actually doing a good effort into this round. X7 is getting a double kill here towards Banana, and all of a sudden, this is a 4 versus 2 situation. Astralis are only 2 men down, or 2 men left, which should mean that this should be an ENCE round. But that's the thing with Astralis. Even though there are only 2 guys left, even though they're playing from behind, this is the best team in the world for a reason. Now, we get to see Siblings get the first kill right here, and we have currently a 3 versus 2 situation. So even though ENCE is doing everything they can in their power to win this round, it still gets down to the wire. It still gets down to a clutch situation. So what's going to happen in a second is that you can see Siblings is taking a little bit of an unorthodox position. He's making a play, and this is where I want to focus. These individual players from Astralis are so good and so skilled. Now, what's going to happen in a second is you can see a flash coming in from Alu that is going to go in here. Now, the instant reaction from Siblings is to drop down from here, hide behind the wall, or use the wall as a cover, and then fight Alu straight away to get that initial duel and get the advantage going into it. So that's what's going to transpire now. You can see the flash come in flying in a second. Siblings drops down using the wall as a cover, gets the frag, and then Dupree follows it up with a double kill. This is why you can't beat Astralis when they're on this level. Individually, they're just so much better than everyone else. And that's just individually. That's one facet of the game. Thank you so much, Jacob. That was your Game Fuel Power Play. My God, that's just displaying not only, of course, the incredible minds that are at play, but also the individual skill that backs it up. These guys are hitting shots so consistently. Yeah. You just, even if you think you've got them anti-stratted, Sean, I'm sure, you know, you got them anti-stratted. You'd solve that riddle. You'd have to still beat them as 5 players in the server. Yeah, that's what makes them so unbeatable is their individual skill
is probably the highest in the scene, as well as their tactics. This would be their 11th tournament they've won since that desk that we sat at in DreamHack Marseille last April. 11 tournaments in less than a year. These guys hardly go to more than one tournament a month. They're not like the other teams in the scene. They don't like, you know, jam-packing their schedule full of tournaments. They've won pretty much all of them. There's only a couple that they haven't. Well, with the Intel Grand Slam in their belt and just starting Season 2 of the Intel Grand Slam with a win at the Major, there's a lot of million-dollar conversations happening right now, and I think that format might be working for them. Well, I think, you know, liking winning and liking money, it goes side by side. So if they can keep that ball rolling in that regard, that'd be fantastic. But some of the things that they do really well, especially on this Inferno game, is that their spacing is always on point. Everybody's awareness, you know, when a duel goes down, when a fight happens, they react. And you could see time and time again the utility that we, you know, elaborated on came into play on their T side. It's the CT side that it's known for, right? So much damage in banana, you know, making sure that they're getting stuck in the choke points. They had that double tactical nuke on the B bomb site where Glaive had both those kills come down over the wall. Everything they did in this Inferno game was perfection. I mean, that's it. You end your grand final of the Major with what our experts are calling perfection. That's, I mean, you couldn't ask for more from that side of things. Of course, we want to see resistance. We want to see Astralis push to their limits. And the fact of the matter is, no one can do that right now. That's the conclusion we're coming to. Yeah, I mean, they're the best in the early game as far as spreading out tactics. They're the best in the mid-round, reading rotations, and they're the best in the late round because they have players like Xyp9x. So can we take stock of where their dominance lies at the moment? Because you know how they're setting records. Nuke and Inferno 100% locked. And Inferno, they have won 100% of the time. Well, here's the problem with that, right? In best of threes, you can only ban one of those two. Well, there's a problem already. So a lot of these series, most teams are going to be starting one map down, right? So before it was you had to ban Nuke. Well, now you have to ban Nuke or Inferno because they're going to pick the other one most likely. So you have to either become really, really good at Inferno, really, really good at Nuke. Yeah. I don't know how that's going to happen. Well, I mean, none of us are stupid enough to think that these records last forever. But I don't know where it happens. I mean, then to be fair, their Nuke, it's been so notorious for so long. People aren't even, we don't get to see Astralis play Nuke that often. It's just gone. I think you have to ban it, right? Yeah, you have to ban it. I've even seen them, you know, lose 2 pistols. I've seen them go down quite big. Nothing stops them from winning on those 2 maps. It's crazy. It is. I actually think MIBR as a team, you know, if they can, you know, really progress this year with the roster they have and the map pool, they play Cache. That means Astralis have to ban it. Yeah. They don't play Nuke. That's their perma-ban, right? So they're not even messing around with that. The other 6 maps is where they have to refine. If they can get their Inferno up to a passable level where they can push and, you know, make Astralis a little bit squeamish. We saw what they did on Overpass. Yeah. They have the recipe to be a very good Dust 2 team. The potential is there, right? But this is still in this team's infancy since they've come back together. Absolutely. So I'm really thinking for the middle of 2019. Definitely not anytime soon. That's the reality. It's time to play catch-up. It's trying, like, is emulation the answer? Do you just go ahead and start copy and pasting Astralis, or do you do it your own way? We've seen a lot of that so far in the scene, but the thing is they keep evolving. So they're always one step ahead of you. They're constantly doing new things at every event, which is what is so amazing about this team is they never get complacent. What was the story? Sorry to cut you off. What was the story you were telling me about Nothing when he was playing against them at this event, where they were running back and forth in halls? You start second-guessing everything. Yeah, Jordan was confused because, I mean, he heard Xyp9x stomping around all over the place, and Xyp9x was all by himself. But it sounds like he has more people with him because, you know, you think it's Astralis, they have people backing him up. You give them more credit. They get away with more than they should, right? And that's part of why they're so good. Is like they're clicking their glocks. I watch Magisk. He lurks Palace. He clicks his clock. Yeah. Like that's enough for you to go, wait, why would he do that? What's that? What does that mean? They're scary as well. They're intimidating. They're just their presence is scary at this point. I think another problem is with emulating that play style that you were talking about is if you engineer the playstyle, if you're the creator of it, you understand the next step. You understand all the functions of it, right? If you just copy it and you don't actually evolve it or put your own little spin on it, then they know the counter to whatever you're doing. It's like me trying to follow a Bob Ross tutorial. Like, you know, I know he knows how to make a happy little tree. I'm just following someone knowing how to make a happy little tree. That's a pretty good analogy. Thanks, man. Yeah, I came up with that on the top of my head. I don't know if you can tell. Yeah, moving away from my teleprompter? Metaphors. What, break it down? No. No, but we can see they're doing their signing sessions. And I want to tell everyone, before you hit that X at the top right corner, we actually are going to be hearing from Astralis, just so you're aware. They're finishing up with their fan signing. We didn't anticipate that they'd be signing all of their fans in attendance here in the Spodek, but they are, and we are going to be hearing from them afterwards. They're going to be joining Tracy Stunner-Sorrentis on the couch to round out the day. And oh my God, the trophy's here. Guys, it's huge. Yeah, I don't think that fits on the plane. It might need its own seat. Yeah,
I'd check that one into. I'd probably check that one in. No, I wouldn't. No, I'm 9. I'd buy a seat. Yeah, for sure. Take it back. But we are going to start reflecting on not only just Astralis and their success, but what a major it has been. Guys, we've spent 3 weeks here talking about our favorite game. What's your biggest takeaway, would you say? I mean, it has to be ENCE and their run, right? That is an unprecedented run for a team like ENCE to make, knocking out the teams they did, Liquid, then Na'Vi, and putting a fight to Astralis in that first map. I could have never seen something like that happening. I thought our scene clearly had, 3 teams at the top. Okay. Liquid, Na'Vi, and Astralis. And so for ENCE to knock those teams out really changed my perception of, I guess, how good they are. Right. I think the problem, if you are a Liquid of the world, or if you are a Na'Vi and you've gotten this far, what's the question? Because you lost to ENCE, your sights are set on beating Astralis, right? That's the case. You're just looking towards them to beat them. ENCE coming through, and no, I don't want to say the other teams got lazy, because you can't take a team like ENCE for granted at all. Yeah. But obviously there was something here that they didn't expect to happen, and that was the resilience of ENCE, right? Here's a big problem as well. Adren has joined that Liquid roster as the coach. Now, if he had joined and they had beaten Astralis here in the Major Grand Final, he looks like a genius. Sure. He's taken on one of the hardest tasks as a coach right now. There's so much pressure on this guy because he's come in, and now that they were unable to progress, they're unable to beat ENCE. Unfortunately, he becomes a villain, right? And I think they have a lot of room to progress. I think Liquid, with those 5 players, we already said best North American roster probably ever assembled. I keep saying probably. I don't know why I do that. Ever assembled. Yeah. They have so much room for growth. And, you heard in that Twist post-game interview where he's saying we didn't play to the game plan. We watched all the demos. There is a chance that we do see some more competitive tournaments as it progresses. It's just everybody else needs to sit back and really reflect on where they want to go as a unit. Get on the same page. But what I've learned from your speech there is that the other facet that we don't discuss, and it's hard to quantify, is that these second best and third best, they have to invest so many resources into beating Astralis as one entity, that you have the chance to fall to a footfall of a surprising team you haven't been preparing for because you've been investing so much into beating just one. And that's the crazy thing is they have to think about which maps they want to play based on grand scheme. Based on Astralis. They don't even get to choose, most of these teams that are forming, these newer teams, they're designing their map pool to beat Astralis, not to be the best they can possibly be. That's like his permaban is cash. Well, but that's like Na'Vi's flaw as well, right? So Na'Vi aren't in a position where they can float it. We've already seen them try it once before and it didn't work out for them because Astralis will go for that punish. That's the problem. If Cage is your permaban and it's the same ban as a team like Astralis and you don't even flirt with the idea of playing it or potentially risk the chance of playing it, then you're giving them a free veto. There's no reason. I don't feel like Astralis needed to ban it in the first phase today. They're the best team, so that's why they thought, well, we'll just get rid of it, get rid of that anomaly. But when you're looking at other matchups, quarterfinals, semifinals, group stage games, then don't need to take the risk on that. That's just one of the maps that is going to either when you play Na'Vi, just not going to be there regardless because they're going to ban it or you're just going to ban it. Yeah. And that means you're more comfortable and better already on 2 of those maps that we've 100% guaranteed, Inferno and Nuke. Then you start going down the ladder. What do you do? How can you touch them? Yeah, well, I love that we're having the conversation that many teams have had. Like this has happened in a team speak about 3 a.m. after a grueling loss, and you sit there and you go, right, guys, so we have to change everything. We have to truly develop our map pool to even guarantee a trophy lift when Astralis are in attendance. And I think that's they don't go. I hope they don't go. Hey, Astralis going this tournament, we might skip it. But see, I think that there's a real ease for people who are watching this and seeing this to fall into the trap of thinking this is a problem. Counter-Strike is boring. Of course, if you've somehow forgotten about semifinals yesterday, then my goodness, you're a goldfish. Short memory. But if you think about the grand scheme, I hope I get to be there when someone has done all of this hard work we've just talked about, and we see Astralis fall, and we see them tested. Maybe not immediately. Maybe, like you said, halfway through 2019. Maybe, we spend the next 6 months talking about 4 different names that we haven't even discussed here, that have started to forge a dynasty to take down the gods. It has to happen, of course, pretty soon, especially on Nuke, because when you watch Astralis play on Nuke now, it's very, very different from when we saw them at the beginning of this streak. They're way more screaming loose. They're abusing all of the things that once worked. And they actually have a very loose playstyle. It's crazy that it's so consistent. That's another gear that they have, though, right? We know them for discipline. We know them for being well-prepared and practiced. And we know them for being in the studio right now. So that's good right. news. Yeah, I think I see a very happy Glaive and Device hanging out on the sofa. But when they get to just, play loose a Counter-Strike and just headshot you,
That's just another look of Astralis, right? So how many different levels and gears are this team? Because we've said it once, we've said it again. I'm going to say it right now. They're the undisputed #1 team of all time. Yeah, and then, okay, so what happens when Billy08 or whatever tweets me and says, what about NIP's 87 and 0? How do I reply to that tweet? You tell him that this is the most competitive era of Counter-Strike in its entire history and different versions. The game has never been played at this level. There have never been so many resources poured in. There have never been so many people playing, watching, studying, and preparing the game. So the 87 and 0 of that time can't compare to the Astralis dominance of now. And on that note, we bid you farewell. And that's enough from myself, Machine, Sean Gares, Sponge, and we head over to Trace Stunner Sorrenthus with your major champions. Yes, it's right. Thank you, Alex. And you guys have been pouring your heart out, sort of like these guys right here with their little friend. They actually just acquired this guy. Congratulations, first and foremost. Quite the showing of dominance. I think it's easily put. Thank you very much. Thank you. So, I mean, how many times, I just have to ask right away. You guys have been winning and winning and winning, and you keep winning. What is it that drives you guys? Yeah, so what drives us the most is that we keep winning, I think. Like, we just want to win all the time, and I think Sonic is doing a really good job of keeping us motivated all the time. Okay. Even though it can get a bit easy to just, like, try to relax, not do your homework before the games because you just think that now you have won so much that you are like really satisfied. But Sonic is doing a really good job of not letting us rest and just keep pushing us. Yeah, because, I mean, maybe you can speak to this some too, Device. I mean, you guys have been around for a while. You've seen the guys at the top, and maybe there's some sort of lackadaisical thing that happens, or they get sort of, I don't know, complacent, or they get sort of in a rhythm that doesn't keep them at the top. Yeah, definitely. We've been at the top before with Kava, and we also did it back in TSM with like Kerrigan and Cajun. It's very different this time. It's more like Clave is saying, Sonic is pushing us. Like, we want to win every tournament we participate in, and then we'll rather skip some tournaments instead of like burning ourselves out. And I think like the main reason that we are doing so well is also that we get some important losses here and there. We lost to I by Power to Liquid at I by Power. They lost to North at Stockholm. Like, those losses actually make us really mad, and then we can push ourselves even more. Yeah, and coming into the major, I mean, you guys did suffer a loss to Liquid. Everybody said, okay, well, this is going to be the one. This is the time where Liquid come out here and we have this amazing grand final. The scripting was wrong. Somebody wrote the book wrong, something here. Right away, though, I mean, I guess we could just take a brief look back at the brackets. You guys did drop a map to the Renegades early on, right? So I've noticed that Mirage was banned today, and also, I mean, did that have any impact there? Is that any sort of... We were a bit confused if they were actually going to pick Mirage. Okay. But they decided to pick Train. Yeah, I don't even remember right now. Yeah, of course Mirage is not like the best map for us, but I still think it's pretty good. We are like really good on 6 maps right now and still working on that catch as well. Yeah, I mean, that is your permaban. You want to try that one soon? Yeah, honestly, like, as you say, we lost 1 map this tournament. It was the Renegades. We were leading 12-3. I don't want to put too much into that game. Honestly, they played really well and caught us off guard with the AUG meta and so on. All in all, we had a pretty clean tournament, I would say. Yeah. And like looking at the video today, everyone was saying ENCE won the video, but when you're the favorite, you have to play into your own strengths. We're kind of expecting either Mirage or Train, and then got the Inferno pick in. Okay. And yeah, we prepared really well for that, and like it played into our. Even though I think like when we go to tournaments and we look at the opponents, I think they play better than they do right now. I'm not sure if it's because we just had a player break or people didn't play a lot or what it is, but I just feel like that the teams, they usually play better when I look at them and then when I start to watch video with the team and so on. So hopefully in the future, I think that people will like step up the game. Yeah, you want your opponents to step up the game. I mean, we do have the vetoes kind of thrown up there on the screen. We could kind of reminisce on what had actually happened there. And I kind of want to go back just a second. And you said something very interesting there about being the favorites. And I guess for some reason online, people seem to have thought that, you know, really and truly, ENCE were about to push you guys to the test there. I can see the smile on your face, Device. And there's something telling about that smile. Like, we saw all of the polls and so on. I think, honestly, the only one we really have to look at is the pick-ems, because that's where people are really try-harding, right? And I think we saved a lot of diamond pick-ems this tournament by being the favorites, going through and winning every single game we have to. And that's impressive, and that's
I'm really proud of the team, and as Glaive says, this tournament has been kind of weird for us because we always like study our opponents, and honestly, sometimes at this time it could be that people have been here for so long that they have shown everything, or that they didn't have time to like prepare well enough for the tournament, because like in the latter part of last year, people were playing a lot better. It could also be like the roster changes that were happening and so on. It could also be us just playing better right now. I'm not too sure about it. It just feels like that even though I'm not hitting my shots, we still win the rounds pretty convincingly, and that just tells me that the opponents is not playing like too well right now. But I think still my teammates is doing a really good job right now, like hitting some amazing shots. Well, you guys are hitting amazing shots throughout the entire time I've seen you as Astralis, right? And that definitely did not stop today. We're actually going to recap some of the rounds if you guys are cool with that. I mean, yeah, sure thing. All right, we're going to load up. We're going to load up round 11 here on Train. This is where things start to get a little bit interesting, and I kind of want you guys to walk me through here. Don't be afraid to say, pause or kind of stop at any moment. Yeah, they have a force buy. We actually know that. Oh, is that where he goes down pop? Yeah. I think he goes. Oh my god! He just instant headshots me. Yeah. I was so mad after that. I was just like, how did he manage to be there so fast? It's true. I was actually playing B this round, I think, and I got like heaven information, and we knew they were going A, and yeah, we just like sometimes when you play against pistols, they do like these kind of random pushes and headshots and so on. And Sib did a really good round. And we saw that on the video that they put down the smoke in Shock's lane. That's what we call it. That's like in between the trains. Okay. And then they push out and wait for it to fade, and then they kill the guy in alley. And that's exactly what they did there, and they caught us off guard. Yeah. So. Oh yeah, we end up in a one-on-one, and I. Oh yeah, you don't make it, right? I don't get the bomb. But yeah. I didn't think he was that low. Everyone said he was low, and I was like, he's real low. He's I'm spraying he's like actually 20 bullets low. on him, and I'm like, why is he not dying if he's low? Yeah. But yeah. Yeah, this was a great round by them actually. It was one of the only rounds they won. They won the first two, then they won one weapon round where they actually like completely aced us, and this was the last round they won on their T side. So I think we played a really solid CT side. Yeah. And that was the general consensus when we were in like halftime. It's basically just a standard 2-on-2 right now. Yeah. Dupree is gonna, when I get the kill now, Dupree is gonna like look for the last guy, see where he is, and then I can like revenge frag him. And yeah, you'll see Dupree die. Me fucking up by not just smoking the bomb and going for it because he was low, but yeah. Yeah, and that is the way it plays. Yeah, so there's the frag on Dupree, and then obviously now things get a little spicy, get a little weird. I'm sure the palms are sweaty. So oh, he doesn't even hear you. Doesn't even hear you. Then the knife doing like this. Yeah, the little twirl there. I was like, yes, this guy, he's feeling himself. Yeah. All right, we'll keep it going, all right, because we got a CT Give us pistol. a new one. Let's talk about CT pistols here, and that's going to be ENCE's CT pistol. We're going to load up round number 16 and take a look at that one, because this is, I think, the real glimpse of maybe ENCE's, going to bring this and put it into a good map, a good game. If we could load that up, that would be spectacular. Here we go. Yeah, it's where he jumps down heaven randomly in the 2-on-1, and Dupree almost win the 1-on-3 or something. Oh yeah. Oh, we missed the smoke. Yeah. Surprise. Someone missed the smoke. We missed the smoke. It's me. Because I have two lineups. Yeah, but we tried both things where you smoke off C or else you can smoke off bomb train. Now, look at it. We die, a lot of people. He's in a 1v3. And then now the guy in heaven, he's going to fuck up immensely. Look, it's just jumping down. Yeah, that was I a think blunder. that's pretty nice. It's kind of YOLO. It's kind of YOLO, but yeah. I think they just called that they should go for him together. So yeah, I think it was a good yeah, call. it's true. They play aggressively. And actually, they played really like YOLO on train. And side as well. I was actually talking to Naf outside, and we're going to load up the next round, which is 17. We actually just kind of talk over it. I was talking to Naf outside, and he said that these guys, they do have a structure, they do have a game plan, but also they will take fights, and they will kind of put themselves out there, and not be afraid to swing, and it kind of works out in their favor sometimes. We saw it on Inferno as well. Like when they got to the T side, they just rushed mid like 3 rounds in a row. Yeah, that's true. But you could really feel it on train. Yeah. Because I think they they just pop flashed outside with smokes and stuff. Oh no, he has the auto shotgun. Who is it gonna kill? Is it Sib or you? Nah, he's going to kill Sibix, and then we're going to die 3 guys to this guy in Ivy, I think. Oh, you love to see that. The blunderbuss, the auto one. Yeah. Yeah. So, round 17, obviously... Full eco. You hate to see it. Does it hurt? Does it sting a little bit?
We actually just wanted to die to like a FAMAS or M4 or something. That's what you're looking for when you have full. But they control, thought, so they don't get too much it's money. the money situation, obviously. It's the money situation, yeah. They thought we were gonna buy it because they bought like SMGs, every one of them. It's pretty weird. Yeah, probably. Well, we do have a couple more rounds here. Don't mind if we do just keep barreling through them. Let's check out round 22. That's where things start to get a little strange. I mean, this was like an inner plant, I believe, from you guys. And as we take a look at round 22, I obviously love the insight that you guys are able to bring here. This is, kind of a very once-in-a-lifetime sort of conversation here. For sure, once in a lifetime. Yeah, once in a lifetime. I mean, as many times you guys win majors, we can always find a couch or a sofa and just kind of keep this banged out. But anyway, let's take a look here if my math serves me correct. Walk me through this round, guys. What an amazing smoke here by Device. Yeah, what is did it land is the question. Yeah, I did. Okay. Smoking off electric for sure. Is this... I think... Now he pushes with the pistol inside. They're That's doing right. Roma, right? Roma or Vega? Vega. Vega, I think, we didn't do Vega, but we wanted to do it. Oh, we wanted to do it, We're so he's gonna pushing win up the lower, round. yeah. He's gonna kill one guy, or headshot one guy. He headshots, no. Yeah. So, in that moment, though, you say you wanted to do a strat. We wanted to do a strat where we fake outside and go inside. Okay. Then we just go out. And that's on the fly decision. No, that's what I call in the beginning of the round. Okay. So that's a set tactic we have. Right. Where And then you see him pushing outside, and he's basically calling for us to go out because we get no contact. We see one guy. I think it's in sandwich, and then we just get the round pretty easy. They stacked 3 guys inside, and one guy pushed up lower. So when I got outside, I saw no one, and we saw one in between the trains, and then we just went for him. And this is actually fucking silly because now Dupree dies, and then I go die with the AWP, and it's like domino effect almost. Yeah. I get one guy get killed, and now they can get the AWP right for free, and then we're like fighting for that AWP. Actually, I think we get him in the end, right? Yeah, we get the AWP, but they save the AWP, but we lose Yeah. a lot of money. Like we could, if Dupree didn't die or I didn't go in the 4 and 3, then. But we have so much money, so it's actually worth for us just to hunt down the AWP. Sort of go for it, right? Yeah, just hunt down the AWP. If we get down the AWP, that's perfect. Huh. Yeah. Yeah. That's basically that round. Yeah. Next one. Next one. Thank Roll you, that Nick. next footage. Thank you, Nick. Let's keep it going. Thank you, next. That's what you guys say every major, or is that like how that works? My We could goodness. do Back that. to back, of course. Yeah. Let's kind of switch things up now. We got Oh, round that's- 24. Is that one you want to go with? I want to see this one because that's Okay. where Sib is clutching. Let's check it out. Roll it. One of the rounds where Sib is clutching. One of the rounds, yeah. So He good. has at been it. pretty good clutch at this event as well. Yeah. Well, we're doing the same tactic we did the round before. Now they push T main. We get a lot of kills. We played like the mid-round situation kinda well, kinda. What is that tactic? Oh, King yeah, win. it's King win, yeah. Yeah. We get the kill on Alu now, and then Yeah, we- that was like where you just felt they were so YOLO. Yeah. Like they just pushed teammates without any reason, it he's felt pushing like. B and getting killed right, and then I think Sib flushes out the guy in pop with the molly, and then he gets the 1-on-2, and the 1-on-2 is the He's exciting going part. inside, right? Yeah. He's Yeah. gonna. Oh you're yeah, gonna look die at now. Saga. I hate that spot. It's just like that. Hate And he that gets spot. this, he drops the smoke, and he peels back, right? And you think, okay, what's going through the team comms at that point? Like, what happens at this moment? Yeah, I was just mad because I knew I was like shoulder picking it, I was checking it, and a lot of people use that angle, and he still killed me with that CC. Yeah. Sib So, sees them pop, he's gonna molly them out, and then I'm gonna peek with the AK. Yeah, you're gonna get a kill. Yeah. That was pretty nice. And then the other guy. And is we in didn't pop as expect well. one more to be there. Yeah, he's so- just kind of turtle in, just hanging out, right? Exactly. Now we can fast forward a little bit Yeah. because Sib is gonna get the after plan, and the after. The most Oh, of he the- was actually higher. We were talking about where he Oh, was. really? Yeah, we Yeah. were talking about where he was That's to pretty Sipix. weird. He didn't- Well, see the whole comm there Yeah. too. As we Yeah, watched and it, I the remember. Molotov. I remember Mac. He said, I think he went up higher, and I was like, yeah, that's probably a good idea because we knew he only had a CC, so he needed that close range. Is he not gonna go when he hears the what I- bomb plan? what- No, he's not. What I don't understand is that how He's can probably Sipix? haven't heard it. How did Sipix That's be on that stupid. train, like on the What side does of the happen? train for so long? Yeah, this is okay. How do so they not see him? he said this after I asked him after, and he was like, "They know it's Sib. I'm the clutcher. They are nervous at this moment." And then he said, "Like I'm gonna just." Oh, he almost see him. Oh my Oh. god. He's saying, "I'm gonna stand like a pretty stupid spot because they're not gonna expect that." And Okay. honestly, he's a little bit Oh my lucky. God. Did he say that? Did Yeah, he he say said that Oh when we my walked God. out after the game. Oh my god. Unreal.
And to have that sort of, hey man, guys, watch this, you know, hold my beer, right? Yeah, he's so good. He's really good at clutching. Yeah, I mean, that seems to be the whole thing for him, like the minister of clutch. But overall, obviously, there was a much more resistant ENCE there on Train. And I guess at this juncture, I kind of want to ask you guys about playing ENCE. And like, how do you think it is that they actually made it here to the finals of the major? Yeah, I think they did a good job. We knew that they were a really good team, but sometimes it was a bit confusing when you saw like video of them. They didn't look like amazing, but still they look pretty good. It's just like their individual level is really strong. I think if they get to work a bit more together on the team play. Definitely the composure as well. I mean, like they were behind against Liquid like 15-8 or something, and they did a comeback against Na'Vi yesterday as well. So I was most shocked over the composure as a team, that they could actually like grind it back. And that was also why when we had the 14-1 lead on Inferno, we were kind of like, it's hard not to get a little bit ahead of yourself, but like when you've seen them doing comebacks, you know that they're actually capable of like being this robotic machine that just goes through comeback and grind it out. Then you know that you have to keep yourself focused, and yeah, I think that was like one of the main reasons they got this far, and individual play as well. And just from my time at Cloud9, like I witnessed times where there would be this big deficit of rounds in between, right? And then you're thinking, okay, eventually that round is going to happen. Yes. And I think that's how those comebacks actually do kind of mount themselves. Yeah, it is. Like you get too satisfied with having a big lead, and then suddenly the other teams is getting momentum, and when they get that momentum, they are just doing the comeback. Yeah, then they will read your plays, and you will just be like one step behind all the time. Well, you say momentum. And here's what I want to ask you guys now. You have all the momentum in the world. You guys actually are ahead of the curve, and you consistently have to set the curve, right? Because the whole world's watching you play. The whole world is kind of designing what they're doing around what you guys are doing. How does that, I mean, in terms of preparation, I don't expect you guys to tell me or, the world what it is that you guys do in practice, but how do you do that? Like, how do you stay on top? First thing first, I want to say that I think we use the most time on preparing for our opponents. Yeah. We use about like 4 to 5 hours just to prepare for a best of 3 game. So that's and I think we are the only team that does that. So how we are doing it, we are of course not going to tell, but we just decided to tell how much time we actually spend on it for people to realize that we actually put in a lot of work. So yeah. Yeah, basically that. I feel, as you say, like one important thing about being at the top of the food chain is that you actually have to keep evolving and expect more from your opponents, and then also expect more from yourself, right? The things we're doing now, we have like a whole backing of an organization that are like looking into the physical aspects, into the sleeping part, like into all like parts of the game. Give us a percentage here or there. We had a physicist, what is it called? Like a psychologist? No, not like physiologist. Massage and like a masseuse. and everything flown down here, and had like a few days of that, and like treatment in that way as well. So we have a lot of stuff going on for us that really helps us just focus on the game, and it allows us, as Glaive says, to like prepare 4 or 5 hours a day when we have to get ready for games. Well, I know OJ had talked to Dupree on the stage, and I'm going to kind of give you guys the same sort of stage. Obviously, it's just you two that have joined me, and that's completely fine. Is there anything that you would like to say outward, I guess, one at a time, towards the audience, the Danes back home, the fans? I can start. Go for it, man. Astralis, boring team. Yeah. Let me comment on that real quick. Like, Astralis is not a boring team. We just like to go into every single detail and do the best we can to be as well prepared as possible, play slow and methodical, because we think that's the way to go, and it is, and we're showing it time and time again. So let's not, of course people can call us boring because we are winning a lot, but maybe the other teams just need to step up their game a bit more, and then we'll have some more fun games. Yeah, I mean, simply put. Sure. You got anything to close out with? Like down here, it's been amazing. Even though we haven't been the crowd favorite, like we live for these arenas, and even though like people are cheering for the other teams and cheering for the underdog, like being a part of this like journey is just like a dream coming true every time we're in the arena. And I just want to thank everyone, especially the Danish fans as well, that travel around the world with us, and our friends and families that
make it possible for us. Yep. Shout out to everyone at O'Leary's. You heard it here first, right? Everyone watching the games at O'Leary's. That does it for the Intel Extreme Masters Katowice Major 2019. It has been my honor to sit here and share a sofa with these gentlemen. And, of course, congratulations to the Astralis organization and everyone involved behind the machine. That is that. Of course, we do need to close this show out. I have to cut it off here. And, well, everything considered, thank you guys. And thank you all at home. Good night and das vidanya. Good night. Good night.